है कि 16 एक्सीडेंट दिसंबर हुआ है माइलॉट। 2019 हाँ, इसमें माइलॉट मेरे को दो दिखा देंगे। सिचुएशन देना चाह हाँ, रही दे हूँ, दीजिए 2 साइटेशन एक विलंब पे और एक्सीडेंट प्रूफ है कि एक्सीडेंट तो है। by the learned first additional motor accident claims tribunal Hoshangabad in MACC number 258/2018. Next para. Shri Jain submits that learned tribunal has failed to appreciate the facts of the case in the correct perspective. Admittedly, accident took place on 11/5/2018 at about 7:15 p.m. Deceased died on 12/5/2018 at hospital when Murg intimation was sent. Full stop. FIR was lodged on 22/5 22. 22/5/2018. Full stop. Author of the FIR exhibit FIR Exhibit P2. Exhibit P2 is Rameshwar Singh, who lodged FIR against who lodged FIR at 23.39 hours on 22/5/2018 upon receiving information on the same date that is 22/5/2018 against driver owner of motorcycle number MP05MR7415. Full stop. It is submitted that in the Murg intimation exhibit P3. P3, it is mentioned that accident took place with an unknown vehicle. Full stop. Reading from the evidence of claimant witness Sanat Chaudhary, son of Shri Revati Prasad Chaudhary, it is pointed out that according to this witness, he had taken the deceased to the hospital and is the author of the FIR. According to him, he was traveling with son of his maternal aunt, namely Jagdish. Full stop. Deceased was father-in-law of Jagdish in relationship. Full stop. According to him, according to this witness, he has studied up to 10th class. In examination in chief, he has mentioned that he had called at number 100 to call for the ambulance. In cross-examination, he admitted that 100 number is dialed to call police and not the ambulance. Full stop. He has deposed that he had given information about the offending vehicle to the police on the date of the accident itself. But this is contrary to the statements given by Rameshwar Singh, Head Constable, Police Station Kotwali, Hoshangabad. They submitted that it's a case of false implication. Even if statements of Sanat are believed to be correct, then fact of the matter is that Sanat claims to be traveling on the motorcycle with Jagdish. Full stop. Jagdish, conduct of Sanat and Jagdish is unnatural. If deceased is related to Jagdish, then Jagdish was obliged to take him to the hospital. Jagdish, in his statements recorded before the police on 23/5/2018, has though given the number of the motorcycle, but has admitted that he had not taken the deceased to the hospital. Full stop. In his statement, he has not said anything about Sanat also taking the deceased to the hospital. Full stop. Even Sanat has admitted that he had not gone to the hospital and injured was taken to the hospital by the ambulance and he had returned back to his residence. Full stop. Thus,
The statements which have been recorded under section 161 are contradictory to the court statements. Full stop. No MLC is produced on record to show that number of the offending vehicle was disclosed to the concerned doctor. It is not the case of the claimants or their witnesses that doctor had any enmity with them, and and doctor had deliberately not recorded the number of the offending vehicle as given by Sanat. Full stop. Learned next para. Miss, आपका शुभ नाम बताइए. Anita. Anita Cathwas. Kathwas, learned counsel for the claimant, places reliance on para 10 of the impugned award and submits that there is only 10 days delay in lodging of FIR. That delay is not fatal. She places reliance on the judgment of Supreme Court in Ravi versus Badri Narayan and others 2011 का 4 SCC 693, wherein it is held that FIR proves factum of accident. Delay in lodging of FIR cannot be said to be fatal because treatment of victim is given priority over lodging FIR. Full stop. Similarly, reliance is placed on the judgment of Supreme Court in Matthew Alexander versus Muhammad Shafi and another 2023 live law within bracket SC bracket close 531, wherein it is held that the standard of proof to be applied by the Motor Accident Claims Tribunal is the preponderance of probabilities, and the standard of proof of doubt, a standard of proof of beyond reasonable doubt would not apply. Next pen. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, certain facts needs to be reiterated. 1. In para 10 of the impugned award, it is evident that IO of the case, Rameshwar Singh, who was examined on behalf of the insurance company, has admitted that he had not recorded any MURG statements while carrying out MURG investigation. Full stop. This is an important aspect which has been overlooked by the trial claims tribunal. FIR was lodged on 22/5/2018. Statements of Sanat and Jagdish are dated 23/5/2018. That is, they were recorded under section 161 and not carrying out investigation for MURG. Full stop. From the MURG report, it is evident that author of MURG report is not Sanat, but is one Kanhaiya Lal, son of Mulchand, and his designation is mentioned as ward boy of District Hospital, Hoshangabad. Full stop. Thus, evidence of Sanat to the effect that he had taken the disease to the hospital and had given details of the offending vehicle is not made out from the MURG intimation. Full stop. There is no MLC available on record to substantiate this aspect. Next para. Jagdish is the material witness. Full stop. He has not been examined before the trial court. Full stop. In fact, it has come on record that वो किसी ने किसको बताया, वो आया था ना उसमें पैराग्राफ, उसने सनत के चौधरी बयान में आया कि प्रथम बार पैरा 7 में प्रथम बार लखनलाल बरेले मोहित ने उसे बताया. पैरा 7 of the impugned award that on 20/5/2018 Lakhanlal Barele had informed the IO that
Mohit had in turn informed Lakhanlal, who was in turn informed by Jagdish Barele that accident had taken place with motorcycle number MP05MR 7415. But neither Lakhanlal Barele nor Mohit were examined in the court of law. Full stop. Thus, conduct of the close relative of the deceased, namely Jagdish, is doubtful. Full stop. Onus was on the claimants to have produced Jagdish in the witness box and adduce his evidence to demonstrate that accident had taken place with the offending motorcycle MP05MR 7415 and it was not falsely implicated. Full stop. In fact, from the Murg intimation, it appears that सॉरी वो मैंने जो वो लिख दिया था ना वार्ड बॉय वो he is lab attendant. Murg intimation exhibit P3 that lab attendant Kanhaiya Lal was instructed by Dr. Sunil Jain that report be lodged in regard to death of Suresh, son of Pritam Das, aged about 55 years, resident of Hasalpur. Full stop. It is mentioned in the Murg intimation that after road accident, Suresh, son of Pritam Das, was admitted in the hospital in injured condition for treatment, who died, and therefore intimation was given for further proceedings. Full stop. Exhibit P4 is the exact intimation which was given by Kanhaiya Lal Yadav, in which it is mentioned full stop. It is evident from exhibit P4 that injured Suresh was found on the road in an injured condition, that which is a sufficient proof that the subsequent witnesses, Sanat, Jagdish, etc., are planted witnesses. Full stop. Had they admitted Suresh in the hospital, then this fact would have been mentioned in the Murg intimation that Suresh was admitted by his relatives in the hospital in injured condition. Full stop. Another glaring fact is that if statements of Sanat are believed to be true, as is sought to be made by Ms. Anita Kathwas, then relatives of the deceased received intimation about the accident on 11/5/2018 itself. There was no occasion for them not approaching the district hospital Hoshangabad and taking care of the deceased. Full stop. None of the relatives gave a statement to the none of the close relatives of the deceased gave a statement before the claims tribunal
to the effect that they had received intimation about the accident from either Sanat or Jagdish on 11/5/2018. Full stop. In examination in chief affidavit filed by Srimati Geeta Bai, there is not a single whisper about the intimation received by her from either Sanat or Jagdish. Full stop. In cross-examination, she has deposed that intimation was given by her son-in-law Jagdish and brother-in-law of her nephew Sanat. Full stop. This statement made in para 11 of cross-examination reveals that both Sanat and Jagdish are related to each other and are also related to deceased. Full stop. This witness has admitted that she had received intimation within 10-15 minutes of the incident that her husband had met with an accident with a motorcycle. Full stop. She has admitted that she was not given number of the vehicle. Full stop. According to her, her son-in-law and brother-in-law of nephew had taken her husband to the hospital. She had reached hospital where she had met both the persons. Full stop. She further deposed that they had given number of the motorcycle and then said that number of the motorcycle is not memorized to her. Next paragraph. ये पढ़िएगा जरा स्टेटमेंट। ये तो कहता है कि ये वापस घर चला गया था। सुरेश, इसका सनत का स्टेटमेंट पढ़िएगा जरा। ने बताया कि उक्त पते पर रहता हूँ दिनांक 11/5/18 को मैं ग्राम पंचायत सोनसो मोती के लड़के जगदीश के साथ आया था। वहां से हम दोनों जगदीश की मोटरसाइकिल से होशंगाबाद गए थे। वहां होशंगाबाद का काम निपटाया। शाम को 7 बजे हम लोग मोटरसाइकिल से वापस आ रहे थे तो मोटरसाइकिल जगदीश चला रहा था। शाम 7:15 बजे से तारीख हम मोटरसाइकिल जगदीश चला 7:15 बजे से तारीख हम ग्राम कैसलपुर के आगे पुलिया के पास पहुंचे तो हमारे सामने एक मोटरसाइकिल क्रमांक 16 का चालन वहां तक तो मैंने पढ़ लिया। इसके बाद उसके सामने एक मोटरसाइकिल के आने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट कर मार दिया। एक साइकिल के आने वाले व्यक्ति को एक्सीडेंट किया। वह बावई तरफ भाग गया तो जगदीश ने उस मोटरसाइकिल वाले को देखा। जगदीश बोला ये तो रायपुर वाले मेरा बाला ससुर सुरेश है। उसने तुरंत रायपुर वाले लगाकर फोन का खबर की कि सुरेश का एक्सीडेंट हो गया है। तभी एक एम्बुलेंस आ गई, उससे उनको सरकारी अस्पताल पहुंचा दिया। और साइकिल जगदीश ने रायपुर आते वक्त हम लोगों को किया कि हम तो सरकारी अस्पताल एम्बुलेंस से चले गए। वहां घर पर सरकार सोनसो आए, वापस आए। जगदीश को भी घर पर लाया था तो हम लोग वापस होश नहीं गए, नहीं वापस होशंगाबाद नहीं गए, वापस हम कहाँ वापस गए। वहां से मैं अपने घर सोमारपुर चला गया था। रात में ही पता एक्सीडेंट तक सोमारपुर चले गए। एक्सीडेंट के बाद चले गए ना। हाँ। They have not gone to hospital. नहीं। हाँ लिखिएगा तो as per the statements under section 161 both the persons Jagdish and Sanat have deposed
that they had gone to their residence. Full stop. Thus, there is a material contradiction in the evidence of these two star witnesses. Chain of events is also not completed. Full stop. Thus, it is evident that it is not the delay in the FIR, but the contradiction in the Merg intimation and the FIR, which is material to decide as to the implication of the offending vehicle. Therefore, judgment in case of Ravi Supra will be of no assistance to the claimants. Next para. As far as judgment in case of Matthew Alexander is concerned, it is true that tribunal is to see the preponderance of probabilities, but the fact of the matter is that when two persons traveling on motorcycle are closely related to the deceased, then their conduct is also required to be seen. They could not have gone back to home without lodging FIR and without giving number of the offending motorcycle to the police authorities and without attending the injured in the hospital. Full stop. All these facts, when taken into consideration in a comprehensive manner, and there is no manner of doubt that it is a case of false implication, a fact which is fortified from the evidence of the head constable Rameshwar. Thus, the impugned award having been passed, oblivious of the ground realities and the facts of the case, and only on the probabilities, ground realities, the impugned award cannot be sustained in the eyes of law. Impugned award is set aside. Appeal is allowed. Impugned award is set aside. Parties to bear their cost. Motion has been passed over cases serial number Application under Order 26 Rule 9 has been dismissed. Was at the stage of final hearing, my lord. Now our case was the reason मैं kindly see the reason of court for dismissing is that कि अगर हमें डिक्री देनी होगी तो हम पूरे की पोजीशन की डिक्री दे देंगे. This was the finding. That's my I'm challenging this. अरे भाई, फाइनल हियरिंग में 26/9 का आवेदन लगाने का क्या औचित्य है? वो डिस्प्यूट आप खुद आप जब बहस करते हैं अंकित जी, आपकी यही एक अच्छाई है, आप खुद अपना केस बता देते हैं. 26/9 का आवेदन फाइनल हियरिंग के टाइम में कब से लगने लगा? वो सर एक आपका ही ऑर्डर की एविडेंस के बाद अगर एविडेंस के बाद तो फाइनल हियरिंग थोड़ा ना हो गई वो स्टेज. जैसे डिफेंडेंट ने ये बताया कि हम तो पूरे में पोजीशन पे, कोर्ट ने फाइंडिंग सर फाइंडिंग आई ऑन द फाइंडिंग कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि हमें अगर डिक्री देनी होगी. पढ़िएगा मतलब पेज 76 77 हाँ 76 77 मतलब प्रकरण के अवलोकन ऑनवर्ड्स मतलब प्रकरण के अवलोकन 76 विदित होता है कि वादी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत वाद घोषणा इससे निश्चित कहाँ पढ़ रहे हैं? पेज 7 77 पढ़ रहे हैं जी. फाइंडिंग्स. हाँ. वादी ने नगर होशंगाबाद स्थित वार्ड नंबर 31 रकबा 30,050 वर्ग फीट पर स्वत घोषणा निषेधाज्ञा एवं कब्जा हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिससे ये प्रकट हो रहा है कि वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से उक्त विवादित स्थल पर कब्जा प्राप्त करना अनुतोष चाहा है. वादी के अनुसार प्रतिवादी का उक्त विवादित स्थल पर कब्जा है. ऐसी स्थिति में वादी ने स्पष्ट नहीं किया कि वो उपरोक्त संबंध में भू स्थल निरीक्षण कराना चाहते हैं. मात्र इस आधार पर कि वादी जानकारी लेना चाहता है कि प्रतिवादी का प्राप्त स्थान संपत्ति कितने भूभाग पर कब्जा है. वादी का आवेदन स्वीकार नहीं हो जाता, क्योंकि यदि वादी का वाद डिक्री होता है तो निश्चित रूप से प्रतिवादी का जितना भी भूभाग पर अधिपत्य हो उसका अधिपत्य प्राप्त करने का अधिकारी. आप ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस करेंगे, बताइए आपका आवेदन कहाँ है? 26 ऑर्डर 26 रूल पेज 73 पे सर 73 पढ़ते हैं उसको. और ये क्या लिखा है? ये कि वादी ने होशंगाबाद नगर के शीट क्रमांक सोएंसो रकबा 30,050 वर्ग फीट भूमि और उस पर बने मकान के संबंध में दावा प्रस्तुत किया है. संपत्ति के आंशिक भाग पर प्रतिवादी क्रमांक 3 ने गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लिया है. इस कारण वादी ने प्रतिवादी क्रमांक 3 के विरुद्ध कब्जा दिलाए जाने का अनुतोष चाहा है. एक ही प्रकरण में प्रतिवादी क्रमांक 3 ने अपने जवाब दावे में कथन किया है कि प्रतिवादी 1/4 का संयुक्त रूप से कब्जा है, जबकि प्रतिवादीगण की ओर से मानने वाले के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं उसमें प्रतिवादीगण का संपूर्ण रकबे पर कब्जा होना दर्शित नहीं है. एक ही अभिलेख पर आई उपलब्ध साक्ष्य ये स्पष्ट नहीं है कि प्रतिवादीगण का वादगत संपत्ति कितने भूभाग पर कब्जा है. आपको मालूम होगा जब आपका 3000 हमने 800 बोला है, हमने प्लीट कहाँ बोला इसमें आवेदन में? नहीं दावे में बोला है. अरे दावे में नहीं, इसमें आपको बोलना चाहिए था कि उसको डिमार्केट कराएं. 800 स्क्वायर फीट पे कब्जा है. आपकी एप्लीकेशन ही बनानी नहीं आई वकील साहब को. वकील साहब को एप्लीकेशन बनानी नहीं आई, पक्षकार को भुगतना पड़ेगा. He should have said in application कि 800 पर कब्जा है, उसको डिमार्केशन कराया जाए. मतलब मैं टेक दिस अपील बिकॉज़ कल फाइनल बहस पे मतलब मैं टेक द लिबर्टी टू रेज दिस ग्राउंड इन अपील. हाँ लिखिएगा, प्रेस फॉर विड्रॉल ऑफ दिस पिटीशन
as he proposes to raise all the grounds in the appeal if the requirement, if so required accordingly. ये कौन सा नंबर था ये? हैं? तो 5 ओवर है ये कॉल. चलिए. नंबर 50. Madam, challenge order dated 28/6/2023, my lord. Having the learned trial court close the right of the cross examination. बताइएगा कहाँ है पेज नंबर? That is exhibit page number 23 से exhibit 24. P5. Yes, my lord. पढ़िएगा. My lord. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है. यस मैडम. प्रकरण के अवलोकन से दर्शित होता है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व नियत दिनांक पर उभय पक्ष को बाधित साक्ष्य का अंतिम अवसर प्रदान किया गया था. न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को यह बताया गया था कि वर्तमान न्यायालय में सिविल प्रकरण न्यूनतम संख्या में विद्यमान है. इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि वादी पक्ष को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जा चुका है. प्रतिवादी गण को पूर्व में उनके द्वारा प्रस्तुत याचिका के आधार पर एक अवसर और प्रदान किया गया था. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा याचिका क्रमांक 100 में पारित आदेश दिनांक 20/6/23 के अनुसार अनावेदक क्रमांक 1 को नोटिस जारी किए गए हैं. उक्त आदेश में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम अनुदेश पर अग्रिम दिनांक पर विचार किए जाने का आदेश दिया गया है तथा प्रतिवादी गण को किसी प्रकार का स्थगन प्रदान नहीं किया गया और न ही वर्तमान में प्रकरण की कार्यवाही स्थगित की गई. उक्त कारण से प्रतिवादी गण को किसी प्रकार का स्थगन प्रदान किया जाना संभव नहीं है. यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिवादी गण को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है तो उनके द्वारा आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर इस न्यायालय द्वारा उक्त आदेश के पालन में यथा उचित आदेश पारित किया जाएगा. किंतु आज साक्ष्य स्थगित किया जाने का कोई पर्याप्त कारण उपलब्ध न होने से प्रतिवादी गण का स्थगन आदेश अस्वीकार किया जाता है. प्रकरणवादी साक्ष्य तो समय कुछ समय पश्चात वादी साक्षी रजनी पटक उपस्थित जिससे शपथ दिलाई जाकर मुख्य परीक्षण प्रारंभ किया गया. मुख्य परीक्षण पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता श्री चित्रांश श्रीवास्तव द्वारा व्यक्त किया गया कि वे साक्षी का प्रतिपक्षण नहीं करेंगे क्योंकि उनकी याचिका लंबित उन्हें एक पक्षी कर दी जाए. ऐसा ग्राउंड है क्या? ऐसा ग्राउंड नहीं. ये वकील साहब के खिलाफ बार काउंसिल में क्यों नहीं मैटर भेज दें? ऐसा कहाँ प्रावधान है? दिस इज शेयर एरोगेंस, नथिंग एल्स. शेयर एरोगेंस एंड ब्लैकमेलिंग. कितनी कॉस्ट पे खारिज करना पिटीशन? ये वकील साहब कैसे क्रॉस से मना कर सकते हैं? और ऊपर से एरोगेंस ये कि एक पक्षी कर दीजिए. मैटर को बार काउंसिल को रिफर कर देते हैं. कौन अधिवक्ता है? चित्रांश श्रीवास्तव. इनके खिलाफ जांच करने के लिए. मेरिट इसमें तो पहले हम मेरिट तो कुछ नहीं है शुक्ला जी. मेरिट कुछ नहीं है आपके केस में. हैं विड्रॉइंग लिखिएगा. श्री शुक्ला आफ्टर आर्ग्यूइंग फॉर सम टाइम एंड अनेबल टू इन convenes this court and looking to the conduct of the counsel for the petitioner Shri Chitransh Shrivastava before the trial court prays for withdrawal of this miscellaneous petition. Same is dismissed as withdrawn. Number 21. Lordship, in this case, I am seeking direction to Your Lordship, All these- before arguments start, I would like to make the submission. I am having instructions. ये बताइए. Your Lordship, by way of this petition, the petitioner is calling for the progress report जी regarding missing report. जी. Admittedly, Your Lordship, the missing girl has filed a WP number 5489/23 5489/22 23 अच्छा. before the Chennai High Court, चेन्नई है. in which the petitioner was having respondent जी. and has already been served चेन्नई notice हाई in कोर्ट that. अभी बना नहीं है. मद्रास हाई कोर्ट है. मद्रास हाई कोर्ट है वो, अभी हाँ. चेन्नई नहीं. हाँ. तो उसमें पिटिशनर को ऑलरेडी नोटिसेस हो गए थे. हाँ. Petitioner has appeared. Hmm. Admittedly, the petitioner, the missing person has got married to one K. Vignesh. ठीक है. वी आर नॉट कंसर्न विद दैट. Yes. But अब क्या बचा? आपको नोटिस है, वो लड़की पिटीशन लगा रही है. अब आप यहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं? लॉर्डशिप, ये स्टेटस रिपोर्ट में सिर्फ वो नाम उनका डिस्क्लोज कर दे, हम यहाँ किसका नाम डिस्क्लोज कर दें? ये जिनके साथ ये बोल रहे हैं कि हमारी मैरिज हो चुकी है. आपकी मैरिज सॉरी, हुई है? हमारी आपकी बेटी लड़की की हुई है? यस लॉर्ड. आपको तो मालूम होगा कि आपकी मैरिज किसके साथ नो हुई है? नो लॉर्डशिप, ये चीज यही चीज मैं चाह रहा हूँ कि सॉरी, ये सब नहीं. पिटीशन आपने ये बात कहाँ लिखी है उस पिटीशन के बारे में?
5489/23 जिसका नोटिस आपको मिल चुका यस लॉर्डशिप, ये एनेक्सर P4 P4 सॉरी एनेक्सर P3 पेज नंबर 22। page 22. Let us see that. In the High Court of Judicature at Madras, Miss Shalini Sharma, daughter of Itna Itna, इसमें आप पार्टी तो है आपकी वाइफ, योर वाइफ इज अ पार्टी टू दिस पिटीशन, और इसी पिटीशन में लिखा हुआ है। यस लॉर्डशिप, इसके बाद देयर आफ्टर ये एनेक्स माइनर है क्या ये लड़की? नो नो लॉर्डशिप, माइनर नहीं मेजर है। क्या हो गया फिर, क्या बचा? सर इन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन लगाया हुआ था इस ग्राउंड पे कि लॉर्डशिप फाइनली सी दी पेज नंबर 27 सॉरी 26 पेज नंबर 26, यस मैं रीड लॉर्डशिप। हाँ प्लीज पढ़िए। It is prayed that this honorable court may be pleased to issue a writ of mandamus or order of direction in the nature of writ directing to respondent number 1, 2, 3 provide proper security and police protection to the petitioner for preventing the petitioner for giving human sacrifice from the respondent number 4 and 5 and pass such order or other orders and such rendered justice। उसके बाद thereafter उन्होंने कोर्ट में क्यों हैरेस कर रहे हैं अपनी बेटी को? लॉर्डशिप हम हैरेस नहीं कर रहे हैं, आपने क्या कर रहे हैं? हमने हैरेस नहीं किया। एक्चुअल में केस ये लॉर्डशिप की हाँ, 15/2/2023 को उन्होंने हमसे बिना बताए चेन्नई पहुंच गई। उसके बाद हमने 2023 को, यस लॉर्डशिप 16/2/2023 को 16 को, चलिए 16/2/2023 को मिसिंग। उसके बाद उन्होंने 18/2/2023 को वहाँ पे एक रिट पिटीशन फाइल की रिगार्डिंग टू पुलिस प्रोटेक्शन कहाँ पर? मद्रास हाई कोर्ट में। किसने फाइल करी? लड़की आपकी बेटी ने? हाँ। यस लॉर्डशिप। जी। उसके बाद देयर आफ्टर यहाँ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ने एक रिप्लाई फाइल किया। रिप्लाई फाइल करने में उन्होंने ये लिखा हुआ है, रिप्लाई जो है एनेक्सर P5। अरे ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है। अब आपको इस ऑर्डर से दुखी है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए या वहां जाके रिव्यू एप्लीकेशन लगाइए। P4 में देयर इज अ ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट 5489। उन्होंने पुलिस प्रोटेक्शन दिया है आपकी बेटी को। इन व्यू ऑफ द peculiar facts and circumstances of the case, this court directs the respondent police to give necessary and suitable police protection to the petitioner. Further, the respondents are directed to file a report with regard to the facts alleged in this case. Matter is already pending before the Madras High Court. लॉर्डशिप उसके बाद डिसाइड हो चुका है। इसके क्या बाद डिसाइड कर दिया? एनेक्सर P6 पेज नंबर 35 उन्होंने विड्रॉ कर लिया उसको। पिटीशन ठीक है, उनका काम हो गया, उन्होंने विड्रॉ कर ली। At the instructions of her brother Yashu Sharma, a case of girl missing was registered and investigated. The investigation shows that she had traveled to Chennai and filed a petition for seeking, alleging various threats to her life. Respondent has no objection for grant of police protection to the कौन से respondent? या आपके भाई यशु शर्मा भी तो वहाँ अपीयर हो गए, आपके बेटे? Her only brother submitted that our investigation revealed that her only brother by name Yashu Sharma is very much alive till today, and the allegation in para 4 of the affidavit about human sacrifice is totally false. It is humbly prayed that this High Court may be pleased to dismiss this writ petition as far as 6th respondent is concerned and render justice. जी फिर अब एक सेकंड, अब आपके केस पर आते हैं। इस केस में क्या मांगा है आपने? लॉर्डशिप ओनली स्टेटस रिपोर्ट मांगा है। नहीं, स्टेटस रिपोर्ट नहीं, एक सेकंड। स्टेटस रिपोर्ट इन रिगार्ड टू हुम? मिसिंग कौन है मिसिंग? मिसिंग कंप्लेंट ऑफ गर्ल। तो गर्ल तो ट्रेस हो गई, वो तो मद्रास हाई कोर्ट के सामने अपीयर हो गई, आपको मालूम पड़ गया उसने शादी कर ली है। नो लॉर्डशिप, ये चीजें क्लियर नहीं हुई है अभी कि उन्होंने शादी कर ली है। अच्छा ठीक है, तो आप जाके ढूंढिएगा उनको। लॉर्डशिप आई एम विथड्रॉ विद लिबर्टी टू फाइल। लिखिएगा। श्री नाम बताइए। देवराज विश्वकर्मा। हैं? देवराज विश्वकर्मा। देवराज विश्वकर्मा। When prays for withdrawal of this petition, accordingly petition is dismissed as withdrawn. चलिए। नंबर 26 राहुल। क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आपके? सर इसमें दे आर अबाउट टू फाइल फाइनल रिपोर्ट इन द मैटर my lord. कब? They have it has not been filed till date my lord, but when they are going to file it? soon my lord at the Soon नहीं, डेट बताइए। सर इसमें Give me the date. सर इसमें PM रिपोर्ट अवेटेड है अभी। अब PM रिपोर्ट कितने दिन लगते PM रिपोर्ट आने सर में? वो असल में जिस डॉक्टर ने PM कंडक्ट किया था हाँ। वो कहीं एडमिट था किसी हॉस्पिटल में, ठीक है, इस कारण से उस रिपोर्ट नहीं आ गई। रिपोर्ट आज कितने दिन से कब तक एडमिट था बताइए। चलिए एफिडेविट फाइल करिए आपके पुलिस कमिश्नर का।
सर फिर अगर आप यही चाहते हैं तो यही हो जाए। सर Let मेरा Police Superintendent of Police District Purvi Nimar Khandwa file his personal affidavit that why final report could not be filed till date when FIR was lodged on 2-3 on नहीं, नहीं, 3/2/2023 3/2. after lapse of more than 5.5 months. Full stop. Next para. Explanation given by learned Deputy Advocate General that doctor who conducted PM was admitted in hospital does not appear to be a reasonable cause. Let medical prescriptions of the concerned doctor who was admitted in hospital and who conducted postmortem be also produced on record by the Superintendent of Police Khandwa along with his affidavit. List this case on. Let affidavit be filed within 2 days. List this case on 28 July 2023. Top of the list. नंबर 32 सर इसमें खंडवा में एसपी है, लेट एसपी भी डायरेक्टेड इसमें शायद ऑर्डर एसपी में को ही तो बोला है सर कमिश्नर शायद ऑर्डर नहीं कमिश्नर एसपी को ही बोला जी। है। एसपी लिखा है ना अभी तक। हाँ। जी सर इसमें क्या हुआ? नंबर 32 सर for a moment my lord may kindly see para 5.2 of the petition my lord. Yes, 5.2. This is the dispute between the family members my lord. बताइएगा क्या है ये? Yeah. Father of the petitioner is having Having joint property and with his elder brother respond number 7 Shri Ram Kumar sold Yadav. some part of the property without the partition or without the consent. तो सिविल सूट लगेगा इसको आपको? सर ये एफआईआर कैसे हो जाएगी पारे साहब? सर आप तो डॉक्टर इन लॉ है ना? सर डॉक्टर इन लॉ है कि नहीं है? यू आर LLB LLM PhD. लॉर्डशिप तो बताइए प्लीज। लॉर्डशिप ही राम कुमार यादव इज आल्सो रिस्पोंडेंट। हाँ हाँ ये इनके साथ में आए थे ना ये राम सुजान लूनिया और दीपक गुलेवर। FIR पढ़िएगा आपकी। चलिए FIR पढ़ते हैं। एफआईआर कहाँ हुई थी? एफआईआर नहीं हुई सर नहीं हुई सर लॉर्डशिप। they are seeking तो क्या किया इन्होंने आपके कुछ साथ? नहीं किया सर, इन लोगों ने तो मारा सर। सर एक कहाँ मारा? ये तो आप फोटोग्राफ देखेंगे लॉर्डशिप, वो लड़की के दोनों ये हाथ में लगी हुई है, देखिए सर। मैं काइंडली तो आप FIR भी दर्ज नहीं करेंगे? एफआईआर भी नहीं सर मेरा रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है कि ये असल में क्या एक डॉक्यूमेंट एक बार और देख लेंगे 23/10/2020 का। दिस इज द लेटर। पेज नंबर अच्छा MLC कहाँ है आपकी? जब इनको मारा आपको तो MLC कहाँ है? एमएलसी नहीं है सर रिकॉर्ड। ठीक है इनसे पूछने दीजिए ना। जी सर सॉरी। 13/6/2023 की MLC कहाँ है? लॉर्डशिप ये अरे आपने जो ट्रीटमेंट लॉर्डशिप जो ट्रीटमेंट किया वो ट्रीटमेंट काइंडली सी पहले MLC बनती है 307 452 324 392 34 IPC में आप FIR दर्ज कराना चाहते हैं? सर पेज नंबर 12 देखें लॉर्डशिप, पेज ये नंबर 12। ट्रीटमेंट स्लिप है, बस उन्होंने हमको इतनी ही दी। क्या दिया है उसमें? क्या लिखा है? पढ़िएगा आप जरा। इसमें देखें क्या ट्रीटमेंट का जो वो दिया है, मेडिसिन दी है। जी जी। और उसके बाद हमको छोड़ दिया विदाउट ड्रेसिंग। उसके बाद ये ड्रेसिंग हमने एनेक्स P3 देखें लॉर्डशिप, शाम को उन्होंने ड्रेसिंग की है, सवेरे छोड़ दिया था, भगा दिया था अस्पताल वालों ने। जी। उनके खिलाफ भी आपने पार्टी बनाया उनको? लॉर्डशिप ये अस्पताल वाले को तो पार्टी नहीं बनाया आपने। वो भी हैंड इन ग्लोव है प्राइवेट रिस्पोंडेंट से। अरे उनके भी खिलाफ FIR दर्ज हो जाती तो कुछ फायदा हो जाता आपको, ह्यूमन राइट वायलेशन में मिल जाता कुछ पैसा। हमने उनकी कंप्लेंट की है लॉर्डशिप। अरे एक सेकंड थोड़ा सा कंप्लेंट समझाएं तो की है। थोड़ा समझाएं तो। आपकी डेट ऑफ एडमिशन लिखी है 13/6/2023। 15 को छोड़ दिया सर। 15 को आपको छोड़ा, डिस्चार्ज किया गया है। हाँ सुबह डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज कर दिया गया। हाँ, ये जो दुर्घटना जो आप बता रहे हैं वो शाम को 4 PM की है 13/6 को। लॉर्डशिप ठीक है ना जी। 13/6 को आप कितने बजे? कहाँ है डिस्चार्ज कार्ड? ये डिस्चार्ज कार्ड लॉर्डशिप, ये देखें डिस्चार्ज टिकट। ठीक है जी। इसमें क्या लिखा है? इलाज आपका क्या किया गया? इलाज क्या इंजरी से आप भर्ती हुए? थोड़ा सा बताइए तो। लॉर्डशिप ये ट्रीटमेंट जो दिया गया वो पेज नंबर 12। एक पेंटॉप दी है टैबलेट आपको। जी ठीक है बाएं हाथ पे लिखा हुआ है दोनों हाथ पे जब टैबलेट पेंटॉप 40 mg और एक आइबुप्रोफेन दी गई है। बस दर्द की दवा। दर्द की दवा। और स्टिचेस है 6 स्टिचेस। अच्छा चलिए फिर उसके बाद आपने कंप्लेंट कब की SP साहब को वो बताइए। पढ़े उसको जरा SP साहब की कंप्लेंट को। 20 तारीख को की लॉर्डशिप। हाँ 20 तारीख को पढ़े।
क्या लिखा है इसमें? जी, आवेदिका नंदनी यादव, पिता श्री शिव कुमार यादव, उम्र लगभग 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर, थाना एनकेजे, तहसील जिला कटनी। ये 5-6 लोगों के खिलाफ है लॉर्डशिप। विषय अनावेदकरण द्वारा आवेदिका के साथ घर में घुसकर बुरी तरह मारपीट कर, धारदार हथियार चाकू से मारपीट कर, गाली गलौज देने, कान से के झुमके छुड़ा लेने एवं जान से मारने की धमकी दिए जाने की शिकायत। महोदय, आवेदिका निम्नांकित लिखित कहाँ लिखा है ये सब एमएलसी में? और थोड़ा सा बता दीजिए, मैं अभी यहीं से एफआईआर दर्ज कराऊंगा। उसके जो हाथ कट गए चाकू से, ये सब एमएलसी में आएगा ना? हाँ सर, वो उसमें पेंटॉप और पैरासिटामोल से ट्रीटमेंट नहीं होगा सर उसके मतलब उसने दोनों जब डिफेंस किया तो इसे दोनों हाथ में ये तो आप दिखा रहे हैं, आपके हाथ थोड़ा ना देखना है। कंप्लेनेंट के हाथों पे चोट लगी, ये तो एमएलसी में आएगा ना सर। इसमें कुछ वही तो बोल रहे हैं कि आपने अस्पताल वाले को पार्टी नहीं बनाया। देयर इज नो एलिगेशन अगेंस्ट द हॉस्पिटल अथॉरिटीज दैट दे आर हैंड इन ग्लोव विद द प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स एंड दे हैव नॉट कंडक्टेड एमएलसी प्रॉपर्ली। ऐसा कहाँ लिखा है आपने आवेदन में? एक लाइन पढ़ के बता दीजिए। आवेदन में है लॉर्डशिप। कहाँ लिखा है बताइएगा? ये आप देखें कहाँ लिखा है? 6 टाके आए, 6 टाके आए। इलाज के दौरान अनावेदकरणों के प्रभाव के दबाव चिकित्सक द्वारा न तो आवेदिका को अच्छे से इलाज किया गया और न ही उसके घाव पर पट्टियां बांधी गई और उसे डिस्चार्ज कर दिया, किंतु आवेदिका को अत्यधिक दर्द होने पर वो पुनः शाम 6:15 बजे चिकित्सक के पास जाने पर उसके द्वारा आवेदिका को भगाया जाने लगा था। आवेदिका के द्वारा ड्यूटी के चिकित्सक से कहा गया कि मैं आपके खिलाफ आप जाइए प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करिए। देखिएगा, पिटिशनर हैज अ रेमेडी। This petition is filed claiming a direction that respondents be directed to investigate the matter in free and impartial manner by a police officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police by lodging the FIR against the accused persons, respondents number 5 to 7, including tractor driver, wife of respondent number 5 and other persons under section 307, 452, 324, 392 and 34 IPC. Next para. Shri Vivek Sharma, learned Deputy Advocate General for the state, reading para 5.2, submits that respondent number 7 is elder brother of the petitioner. Full stop. Sorry, is elder brother of the petitioner's father. Yes. There is a dispute in regard to property, as is mentioned in para 5.2, between the father of the petitioner and the respondent number 7. Allegation is that respondent number 7 sold some property in favor of respondent number 5 and 6 without obtaining partition and consent of the petitioner's father. Full stop. It is submitted that it's purely a civil dispute. There is no MLC on record to substantiate the averments made in the complaint Annexure P4 addressed to the Superintendent of Police and various other authorities. Full stop. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, I am of the opinion that petitioner has an alternative statutory remedy as held by Supreme Court in case of Sakri Vasu. Petitioner is free to avail said remedy. The aforesaid liberty petition is disposed. My lord, may please be direct the PI to FIR lordship. अच्छा चलिए ठीक। नंबर 30 मानसून मिश्रा। The date in Annexure P1 has wrongly been mentioned as 6th of May, my lord. In fact, it is 6th of June 2023. Annexure P6. परमिशन दे दी आपने, 6 जून है वो डेट, गलत हो गई। चलिए जी सर, ये 30/6 का लेटर का रेफरेंस इसमें इस लेटर में है। 30/5/2023 का। ये इसमें इनके खिलाफ में दी इंक्वायरी वाज कंडक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर एंड द पंचनामा वाज आल्सो प्रिपेयर्ड माय लॉर्ड, एंड द शो कॉज वाज इशूड इन द मंथ ऑफ February as well as March. The petitioner replied to that show cause, my lord, and on consideration of the reply filed by the petitioner, पंचनामा is dated 20/1/2023। अब फिर क्या दिक्कत है? My lord, the impugned order was passed on 6th of June, and prior to that sanction was given. Not prior to that, he is saying that it's a typographical error. My lord, on the same date sanction was given. sir, my lord, the reference is 30th of
May. अरे वो 30th of May का रेफरेंस तब ऑब्सोलीट हो जाता जब ऊपर वाली डेट को 6/5 पढ़ेंगे। No, my lord. जब 6/6 पढ़ेंगे तो 30/5 का रेफरेंस ऑब्सोलीट नहीं है। Impugn order was passed in the month of June. Which मुझे 30/5 का जो ऑर्डर रेफरेंस दे रहे हैं, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर दिस लेटर वाज इशूड। 30/5 का जो रेफरेंस है माय लॉर्ड, इम्प्यून ऑर्डर तो 6 जून का है, तो उन्होंने पेरूजल किया बिफोर ग्रांटिंग सैंक्शन। ये एसडीओ का ऑर्डर तो 6 जून का है जी सर। ये सेम डे 6 जून को तो कलेक्टर ये यहाँ रेफरेंस 30/5 का किसका आ रहा है, ये बताइएगा 30/5 थोड़ा का सा। सर, ये लेटर है, ये इसका एसडीएम का। कौन सा लेटर है ये सर एसडीएम का लेटर है जी। That is my case, my lord. Before declaring me as a guilty, my lord, he issued a letter. I'm sorry. It was conducted, that is also on record, my lord. And exhibit P10 may also be seen. ये अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में है। इस लेटर पे अभियोजन की ये अभियोजन की स्वीकृति के लिए है। जी जी ठीक है जी सर। इसके पहले एक सेकंड के लिए एक एनेक्चर P10 देख लिया जाए सर एक बार। ठीक है। ये P11 जब कलेक्टर साहब ने ऑर्डर किया, कलेक्टर सतना ने, सेम डे एसडीएम ने डायरेक्ट किया कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को, ये बोलते हुए सेकंड पैराग्राफ आता, आपको निर्देशित किया जाता है कि सेवा सहकारी समिति मर्यादित बदनपुर द्वारा संचालित उचित मूल्य दुकान करकरा विक्रेता कालीचरण के विरुद्ध दर्ज कराकर महोदय को करें। फिर ये 9/6 का 9/6 का है, दैट इज देयर आफ्टर 6/6 को आया, 9/6 को इनने डायरेक्शन दिया डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर। इसके पहले सर ये अनेक्जर पी पेज 42 पे है, अनेक्जर पी। नहीं, देयर इज नो इलीगैलिटी इन द ऑर्डर। my lord. I'll Sub divisional officer in terms of the inquiry reports etc. sought concurrence of the collector to lodge FIR. that is Once he received concurrence on 6/6, then he passed this order, which is annexure P10 P8 P18 8 है 18 8 my lord, object. P8 My case is that, my lord, before declaring me, अरे जाके बेल कराइए अपनी। my lord, kindly appreciate, my lord, I am declared as guilty by this order. Before that, I was never been guilty. There was no order. पंचनामे पे आपके साइन नहीं है? पंचनामे में that I have आपकी एब्सेंस में हुआ है। एक सेकंड जी जी। Now let us come with this. Annexure P2 का पंचनामा कब हुआ है ये? This was on 20th of January 2023। इसमें we have disputed this signature, my lord. नहीं, I mean that on merits, my lord. that this court will not look into My lord, it। that is thereafter, my lord. पंचनामा है जी। उसके बाद में फिर एक focus notice है। नोटिस है P4 जी ठीक है। Yeah, this kindly see, my lord. This notice was issued on 21st of February 2023. ठीक है। Kindly see the allegation which is being leveled. हाँ क्या कहा है? Yeah, this is only thing. आवेदिका श्रीमती केशकली कोल सो एंड सो जनपद पंचायत कहाँ मैहर। पढ़ रहे हैं आप? ये मतलब P3 पेज 34। Page 34 yes। दिस इज द फर्स्ट शो कॉज नोटिस गिवन टू मी, मतलब मैहर शिकायती आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। ग्राम पंचायत ककरा की आम जनता को 4 माह से सेल्समैन कालीचरण गर्ग द्वारा गल्ला वितरण नहीं किया गया। आम जनता अगर बोलती है तो गल्ला क्यों वितरण नहीं करते हैं? दिस वाज इशूड टू मी, my lord, by the competent authority. उसका आपने जवाब Thereafter I have filed a reply. Again another show cause notice was issued, my lord. जी That was P5 20/3/2023 20/3 का। ठीक है। There was 6 allegations which were leveled against me. और ये लिखा है इन्होंने माह अक्टूबर में 9.72% खाद्यान्न वितरण पाया गया। माह नवंबर 22 में 78.89 पाया गया। माह दिसंबर में 0% खाद्य वितरण पाया गया। But what आपके द्वारा हितग्राहियों को खाद्य जी मतलब the report of the supply officer itself shows that कि no food grains were allotted. Whatever the food grains I have received, I have given. My lord, kindly appreciate, my lord. हाँ बताइएगा। That no food grains were allotted। I'll appreciate. Clause 6 of this show cause notice, my lord. हाँ पढ़िएगा। यह कि उक्त स्वयं की शासकीय उचित मूल्य दुकान के ऑनलाइन आधारित वितरण का अवलोकन करने पर माह सितंबर 2022 में 92.15% खाद्यान्न वितरण किया जाना पाया गया। अर्लियर इट वाज देयर कि नो माह अक्टूबर तो बंद है। चलिएगा तो माह अक्टूबर 2022 से 9.72% खाद्यान्न वितरण पाया गया। माह नवंबर 2022 में 79.89% खाद्यान्न वितरण पाया गया। अर्लियर देवर काइंडली सी क्लॉज 2। इसमें क्लॉज 2 देखिए। लेट अस इनका कहना है कि दुकान बंद थी, उसके बाद नीचे रिपोर्ट में कह रहे हैं कि आपने वितरण किया इतने % का। हमने देयर इज ओनली डिफरेंस विद रिगार्ड टू ऑफलाइन व्हिच वर सेंड इन द कोविड, वो आज तक इन्होंने मीट आउट
नहीं किया। कोविड में क्या हो गया? कोविड में इन्होंने, चूंकि ऑनलाइन में वी हैव, कब तक था? मतलब 2022 का वही है जो आज भी शॉर्टेज है, दैट इज ओनली देयर। ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर कोविड की शॉर्टेज? नो मतलब व्हाट दे आर एलिजिंग कि आपने अक्टूबर से लेके आपने बंद थी, दुकान बंद थी। नाउ दे आर सेइंग कि आपने इतना वितरण किया। देयर इज अ कॉन्ट्राडिक्शन इन द शो कॉज नोटिस। आई हैव गिवन द रिप्लाई। मतलब आपका जो कमी पाई गई है जी, पीओएस मशीन से प्रदर्शित स्टॉक का मिलान करने पर गेहूं 100, दैट इज बिकॉज ऑफ ऑफलाइन इज नॉट बीइंग कंसीडर्ड। दिस इज एंटायर स्टेट मतलब वी आर फेसिंग। Okay. That is there, my lord, because offline supply was made without there being any online purchase, without taking thumb impression. That is the offline shortage. जाके बताइएगा ट्रायल। That I have already disclosed. ट्रायल में बताइएगा। Okay, thereafter, my lord, kindly appreciate, my lord. P8 may kindly be seen. P8 P8 is the impugn order. हाँ। Kindly see, my lord, these are the allegation. Page 44 is the relevant one, my lord. Yes. My lord would see, my lord, clause 6, verbatim whatever the show cause notice is written. आपके द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न, my reply has never been considered. जी। कहीं रिप्लाई कहाँ है बताइएगा ना आप? मैं दे रहा हूँ। ये P5 का रिप्लाई कहाँ है आपका? मतलब दैट वाज फाइल्ड मतलब P6 पढ़िएगा क्या लिखा है आपने? यह कि कंडिका 1 पे अधिरोपित तथ्य में स्टॉक वगैरह दर्शित नहीं है, जबकि मौके पर दीवार पर अंकित है। किराए के मकान है जिस पर अन्य अधिक नहीं लिखाया जा सकता। स्टॉक की भाव सूची अंकित है। यह कि कंडिका 2 पे दर्शित निरीक्षण में स्टॉक का अंतर दर्शाया गया है, जबकि कोरोना के समय जो ऑफलाइन वितरण विभाग द्वारा कराया गया है वह विभाग द्वारा पीओएस मशीन से कम मात्रा में घटाकर अत्यधिक मशीनों पर स्टॉक कराया गया है। जो सभी मशीनों पर स्टॉक है विभाग को घटा देना चाहिए। शासन स्तर पर कई बार आदेश आए हैं, घटाया नहीं जाकर। खुद खाद्यान्न अंदर कमरे में रखा है, कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी बाहर बैठकर दूसरे के माध्यम से मिलान पर लिखे हैं जो वैध नहीं है। इस कारण से अंतर निराधार है। यह कि कंडिका 3 पर दर्शित उप सरपंच द्वारा कथन कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा ही विरोधाभाव लिखा गया है। उसके द्वारा बताया गया है कि अगस्त 2022 के बाद वितरण नहीं कराया गया, जबकि कनिष्ठ आपूर्ति द्वारा अपने कथन अनुसार कंडिका 6 पर अंकित आरोप उस कथन को निराधार स्वयं कर रहा है। उसमें सितंबर 92% वितरण दर्शाया गया। 3 पढ़े जरा, कंडिका 3 पढ़े। मतलब मौके पर उपस्थित इतना बताया गया कि माह अगस्त में आखिरी बार विक्रेता द्वारा दुकान खोलकर पीओएस मशीन पर हितग्राहियों के अंगूठा लगवाकर खाद्यान्न वितरण किया गया है। इसके बाद आज दिनांक तक भी दुकान नहीं खोली गई। माह अगस्त 22 के पश्चात किसी भी हितग्राही का अंगूठा पीओएस मशीन में नहीं लगवाया गया। जी। यह कि मौके पर उपस्थित हितग्राहियों द्वारा प्रत्येक पात्रता पर्ची से 10 किलोग्राम गेहूं पात्रता से आहरित कर लिया गया एवं प्रत्येक हितग्राही को बाद में उपलब्ध कराने का आश्वासन दे दिया गया, किंतु बाद में भी वितरण नहीं किया गया। यह कि राधा शुक्ला शिवम स्व सहायता इतना अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि माह जुलाई में 2.88 खाद्यान्न पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा लिया गया है कि खाद्यान्न आज तक नहीं दिया गया। साझा चूल्हा का खाद्यान्न नहीं दिया गया है। शासकीय दुकान स्वयं दैट इज ठीक। एंड दिस वी हैव कैटेगोरिकली गिवन। नाउ व्हाट द अथॉरिटीज हैव डन, पेज 44 में काइंडली। हां, पेज 40 जी। यस। आफ्टर द एलिगेशन माय लॉर्ड, आपके द्वारा हितग्राहियों को खाद्यान्न, नो एडजुडिकेशन विद रिगार्ड टू माय रिप्लाई। ठीक रखा गया। स्वयं के तहत दंडनीय अपराध है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम वी केम टू नो माय लॉर्ड। दिस ऑर्डर इज अपीलेबल। अपीलेबल माय लॉर्ड, दैट इज इट। यू गो एंड फाइल अपील अगेंस्ट। my submission is that my lord, this order was passed in the month of June my lord, on 6th June. That is there. Thereafter the finding is there. आपके ये अपीलेबल ऑर्डर है, कि अपील फाइल करिए। my lord, एक सेकंड, मतलब I am not take more than 1 minute. विक्रेता को my lord, by this order I have been declared guilty my lord, and thereafter my lord the prosecution ought to have been sanctioned. No, you file my lord, what adjudication is being done by the collector while granting sanction my lord, without there being any order? No. My lord, kindly appreciate, because overleaf page, now the prosecution is being initiated by the order dated 9th of June, and now wherein this order reflects that the collector has granted sanction. Anyway, my submission, अपील लगाना है तो करिए, नहीं तो इसको मेरिट पे खारिज। Appellate authority is collector only, who himself has granted without there being any order. There are two different things. There are two different things. Under the control order, before lodging FIR, concurrence of the collector is required. That is a different aspect, and filing appeal is different. My lord, you may file appeal if you would desire. My lord, my this anxiety, my lord, that is there, my lord, because collector without there being any order has granted sanction. So there is a preconceived notion, my lord, the authorities have acted. Unless until order is there, my lord, how the sanction is being granted? Control order 16.8 provides, my lord, the collector ought to have applied its mind. There is no order. 16.8 does not say that you have to be given any opportunity. No, my lord, I am not granting, seeking any opportunity, my lord. I am only the concurrence what the 16.8 is saying, my lord. My view is very clear. My lord, I have read, my lord, the division bench, my lords, have dealt with this issue, no opportunity is being granted. But 16.8 on finding an irregularity. The irregularity is found on 6th of June. एक ही choice है, either you file appeal
or I decide this case on merits, whatever you like. My lord, my submission is that, my lord, the authority. Now you are wasting time. My lord, my submission is only that, my lord, there is no. Merits will hear. This writ petition is filed being aggrieved of the order dated 6/6/2023 passed by the sub-divisional officer within bracket revenue bracket close Maihar district Satna, whereby recording a finding of shortage of grains allotted to the PDS where petitioner works as a sales officer. Yes. Salesman. Man. Directions have been issued for lodging of FIR against the petitioner. Full stop. It is also directed that petitioner be removed from the post of salesman and salesman. Full stop. Petitioner's contention is that before lodging of FIR, concurrence of collector Satna was must. Reading annexure P11, it is pointed out that collector Satna gave concurrence on 6/5/2023, referring a letter of subdivisional officer Maihar dated 30/5/2023, whereas said order was passed by the subdivisional officer on 6/6/2023. Next para. Shri Vivek Sharma, London Deputy Advocate General, in his turn submits that he has instructions to convey that there is a typographical error in the date. In fact, it is 6/6/2023. Collector gave concurrence to lodging of the FIR in terms of the provisions contained in para 16 within bracket 8 of the Madhya Pradesh Civil Supplies Control Order, Public Distribution Control Order, PDS Distribution Control Order, पूरा नाम लिख लीजिए, 2015 on 6/6/2023 in reference to a letter sent by the subdivisional officer on 30/5/2023. Letter sent by the subdivisional officer is also brought on record. Full stop. It is taken on record. Next pair. The issue is that whether petitioner has been prosecuted behind his back or there is material to take a view which has been taken by the subdivisional officer. Full stop. It is an admitted fact that a Panchnama annexure P2 was prepared on 20/1/2023. So at this stage, learned counsel for the petitioner submits that he disputes his signatures on the said Panchnama, but that is not a matter to be cognizance of which can be taken at this stage. Full stop. Thereafter, show cause notice was given to the petitioner, that is contained in annexure P3. Reply was filed by the petitioner as contained in annexure P4 on 28/2/2023. Thereafter, again a show cause notice was given in March 2023 as contained in annexure P5. Thereafter, petitioner had though filed reply as contained in annexure P6 dated 25/5/2023, but being not satisfied with the reply, subdivisional officer sought concurrence of the collector to to lodge FIR against the petitioner. When concurrence was received, then he passed the impugned order. Full stop. Impugned order is appealable, but petitioner's contention is that since collector has given sanction for prosecution, therefore appeal will be a hollow formality. Next para. As far as impugned order of subdivisional officer is concerned, there is a specific finding recorded showing shortage of more than 100 quintals of wheat, 302 quintals of rice, 10 quintals of salt, and 2 quintals of sugar. Full stop. Total shortage is to the tune of 10,84,411. Full stop. Petitioner is a custodian. Petitioner as a salesman was a custodian of the goods which were entrusted to him
for distribution under the public distribution system. Full stop. He could not have and cannot embezzle the goods or misappropriate them for his own benefit. Full stop. His contention that physical slips have not been taken into consideration is not borne out from record because onus was then on the petitioner to have produced those physical slips through which food grains were distributed and to complete the record with the POS machine to demonstrate that there was no shortage. Full stop. Petitioner's contention that junior supply officer was sitting outside and some material inside the godown was not taken into custody is also not made out. If that was true, then petitioner should have reported this matter to the higher authorities immediately. Full stop. As an afterthought, this petition is filed. Full stop. Petitioner is claiming relief of quashing of the impugned orders and also seeking a direction to the respondents to not to take any coercive measures. Full stop. This prayer of not taking coercive action has been deprecated by Honorable Supreme Court in case That is of, not my prayer. I'm sorry. in case of That is not my prayer. Niharika infrastructure. Full stop. My lord, I'm sorry, my lord, that is not my prayer. I'm only seeking for पढ़िएगा prayer 2 पढ़िएगा. Issue a writ in the nature of mandamus directing the respondent to not to take any coercive action against the petitioner in respect of order dated 6/6 इतना इतना passed by इतना इतना. That is SDO order. ठीक है, उसमें भी तो FIR दर्ज करने का आदेश है. FIR वो 9 का है. अरे नहीं 6/6 का ही है. Followed by the 9/9. नहीं followed by से नहीं होता. 6/6 में ही FIR दर्ज करने का लिखा हुआ है. 6/6 में ही आपके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए लिखा है. इसको फिर से पढ़ लेते हैं. जी जी जी. पृथक करें तथा वितरण कार्य प्रभावित न हो करें. श्री राजीव पांडे कनिष्ठ मैयर विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराकर 3 दिवस में प्राथमिकी की प्रति. And thereafter the order. I'm sorry. ठीक है, फुल स्टॉप. Thus and full stop. Thus, when there is prima facie material against the petitioner and there are directions for lodging of FIR, then investigation cannot be curtailed at this stage by extending undue protection to the petitioner. फिर वो मेरा 3/7 वाला जजमेंट उठा लीजिएगा, ताबिश के पास है. ठीक है, कैसे बनता है और इसको डिसमिस कर दीजिए. सीरियल नंबर 50 कुमार गौतम रोहित जैन. Lordship, petitioner is a colonizer, Lordship. जी. Petitioner is a colonizer. हाँ. He built a colony in year 2000. आप बता रहे थे आपने प्लॉट छोड़े हैं. जी. वो कहाँ से मालूम पड़ेगा? जी. वीकर सेक्शन के लिए आपने प्लॉट छोड़े हैं, उतना बता दीजिए कहाँ है. ये सर ये पेज नंबर 27. पेज नंबर 27. क्या लिखा है उसमें? इस पे मैप लगा हुआ है सर. हाँ. इसमें ये जो शेड्यूल ऑफ एरियाज लिखा हुआ है. हाँ, लिखा शेड्यूल ऑफ एरिया. हाँ, ये राइट हैंड में. हाँ, लिखा है. इसमें नीचे से लिखा हुआ है प्लॉट फॉर हाउसिंग ऑफ EWS. हाँ. 500. क्या लिखा है? 500 क्या स्क्वायर मीटर एरिया है सर. एरिया 500 स्क्वायर मीटर मतलब रफली 5000 स्क्वायर फीट. जी. बताइए कितना छोड़ना था आपको? जो 15% रहता है सर. सैंक्शन का 15% रहता है. तो टोटल सैंक्शन एरिया कितना है? 1 मिनट सर, ये थोड़ा सा और आगे देख लें. प्लॉट फॉर LIG भी है. नहीं, LIG उसमें नहीं आता, EWS में नहीं आता. सॉरी, जो आपको प्लॉट छोड़ने वो EWS के लिए छोड़ने हैं, LIG वाला नहीं आएगा. EWS. हाँ, EWS आपने 500 वर्ग मीटर छोड़ा है. अब बता दीजिए प्लॉटेड एरिया टोटल है आपका 12,346.71 स्क्वायर मीटर. कितना छोड़ना था पॉलिसी में? एक और देख लें सर. इसमें EWS के लिए है और ओपन एरियाज है. कहाँ? P4 पढ़िएगा. एक सेकंड सर, इसको पूरा देख लें साहब. हाँ. ये पेज नंबर 27 मैप पे. हाँ. इसमें ओपन एरिया और EWS के लिए प्लॉट छोड़ना. हाँ, ठीक है. तो ये ओपन एरियाज आप देखेंगे सर, इसमें ओपन एरिया तो अलग चीज है. शो कॉज नोटिस बताइए. जी. इम्प्यूग्ड ऑर्डर पढ़ते हैं पहले. P1 में है ना. उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भ में लेखे कि आपके द्वारा फेफरताल तहसील नर्मदापुरम भूमि खसरा नंबर 5.9 एकड़ पर कॉलोनी विकास की अनुमति ली गई है. प्रकरण में संलग्न गणना पत्र के अनुसार नगर पालिका अधिनियम 1998
नियम 9-10 के प्रावधानों के तहत आवासीय इकाई आश्रय शुल्क एवं अतिरिक्त आश्रय शुल्क की राशि का प्रावधान अनुसार निकाय कोष में जमा कराया जाना। आपने कब जवाब दिया इसका शो कॉज नोटिस का? शो कॉज नोटिस, वेयर इज योर रिप्लाई? ये रिप्लाई है सर, P4 है सर। P4 पढ़िएगा, उसमें क्या लिखा है आपने? P4 पेज नंबर? ये पेज नंबर 28 है सर। पेज ये नंबर 28 पैरा 2 पे लिखा हुआ है, पढ़िएगा। यह कि नगर पालिका कॉलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण निर्बंधन तथा शर्तें 98 के नियम 10 में दिए गए विधिक प्रावधानों के अनुसार आवेदक द्वारा अपनी उक्त वर्णित ग्राम फेफरताल स्थित कॉलोनी साई ग्रीन सिटी में समस्त अनुमतियां प्राप्त कर। ये बताइए नियम 10 क्या है? हाँ, नियम 10 उसी का है। पढ़िएगा, नियम 10 तो पढ़िए ना। हाँ, नियम 10 पढ़ता हूँ सर। हाँ। इसको पढ़ो कि नियम 10 पढ़ो? पहले नियम 10 पढ़िए, फिर इस पे आएंगे। नियम 10 वो सर बुक में मैंने इसको कोड भी किया है सर। क्या? तो नियम 10 पढ़े ना। हाँ, नियम 10 में है सर। ये पेज 5.3 में 10 इन रेसिडेंशियल कॉलोनीज अवेलेबिलिटी ऑफ प्लॉट हाउसेस फॉर वीकर सेक्शंस ऑफ आप पढ़ रहे सोसाइटी। हैं? ये पेज 6 में है सर, मैंने रिप्रोड्यूस किया है उसको। अच्छा। In every residential colony in the urban area out of the area of the developed plot, the colonizer fully developed plots equal to 15% of the size 32 to 40 square meter एरिया shall have 15% ऑफ द साइज ऑफ 32 to 40 स्क्वायर मीटर। तो आपको कितने प्लॉट छोड़ने हैं? हाँ, वो मैंने छोड़े हैं सर। 15%। कितने? 32 से 40 स्क्वायर मीटर ईच के। जी। अब वापस आप पेज 27 पर आ जाइए। टोटल कितने प्लॉट्स हैं आपके? सर ये तो प्लॉट इसमें बहुत सारे दिख रहे हैं। अरे बहुत सारे दिख रहे हैं ना जी भाई, नंबर तो हम ये 83, 86 तक पढ़ पा रहे हैं, 92 तक, 102, 102, 105, 107, 100 मान लीजिए। 100 का 15% हुआ 15 प्लॉट। जी। 15 प्लॉट 32 से भी कर ले, 32 स्क्वायर मीटर के। ये सर इसमें नीचे देखेंगे तो ये प्लॉट दिए हुए हैं। कहाँ दिए? ये वही तो लेआउट प्लान जो है इसके ऊपर में थोड़ा सा प्लॉट फॉर हाउसिंग ऑफ ईडब्ल्यूएस और उसी के ऊपर और भी प्लॉट है, प्लॉट फॉर। अरे भाई ये 15% होते हैं, इतना बता दीजिए आप। 15% है सर। कैसे है? इसका कोई डिस्प्यूट इन्होंने नहीं, आपने कहाँ लिखा है इस रिप्लाई में ये बात क्लियर कट? पर दी नोटिस लॉर्डशिप You file reply. I'll direct them to carry out spot inspection. If you have left, you have made compliance of this rule 10, then they will withdraw this notice and. Lordship, in the similar petition, court has stated this. नहीं, हम तो अभी इसको डिस्पोज ऑफ ही कर दे रहे हैं। इसको डायरेक्शन देकर कि ये स्पॉट इंस्पेक्शन करा लें इस मैप के हिसाब से, P3 के हिसाब से। अगर मौके पे पाया जाता है कि आपने रूल 10 की कंप्लायंस की है, देन दे विल विथड्रॉ देयर नोटिस। मैं जस्ट सबमिट वन एस्पेक्ट। इन्हीं के खुद ही के मैप में है कि इन्होंने 2.25% छोड़ा है, वो मैप में लिखा। ठीक है, देख लिया मैंने ये तो। आप स्पॉट इंस्पेक्शन करके देख लीजिए 15% छोड़े कि नहीं छोड़े। जी, गलती जो हमारे इसमें भी है, मैं पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ, जो गणना पत्रक है सिर्फ रूल 9-10 पे नहीं है, वो 12 पे भी है। 12 पे क्या इनको 2% सुपरविजन चार्ज देना, अगर ये कंप्लीट नहीं करते कॉलोनी, वो बात की चीज है। वो गणना पत्रक में वो भी इंक्लूडेड है। गलत है ना आपका गणना पत्रक? जी, ने वो मतलब सिर्फ मेंशन नहीं किया है, प्रोविजन को मेंशन नहीं किया, बाकी गणना पत्रक में सब कुछ है सर। एक बार आप अगर पेज 17 देखेंगे। रिस्पोंडेंट म्युनिसिपल अथॉरिटीज, रिस्पोंडेंट नंबर 5, चीफ म्युनिसिपल ऑफिसर, म्युनिसिपल काउंसिल नर्मदापुरम, in issuing notice annexure P1 dated 1/3/2023 asking him to pay certain amounts। लॉर्डशिप, मेरा निवेदन ये है कि सर अदर केसेस में ये स्टे हुआ। अरे हम इसको भी डिस्पोज ऑफ कर देना, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ठीक सर। क्या लिखा? एज पर द कैलकुलेशन। हाँ, 5 म्युनिसिपल काउंसिल नर्मदापुरम in issuing a show cause notice asking him to deposit shelter fees and extra shelter in terms and extra shelter fees in terms of the provisions contained in section 9 and 10 so in terms of the calculation sheet Madhya Pradesh Nagar Palika within bracket registration of colonizer। इसमें एक्चुअली कर्मकार और वो सब भी जोड़े हैं सर। एज पर इसमें शेल्टर फी नहीं है, इसमें कैलकुलेशन किया हमने, वो इसके साथ अटैच करके दिया है, उसमें कर्मकार एस्टीमेट भी है। रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉलोनाइजर टर्म्स एंड कंडीशंस रूल्स 1998। yes, full stop। It is pointed out that while making calculation attached to
the said notice certain amount under rule 12(2) has been added. Full stop. सर इसमें 12 का कहीं नहीं है सर, तो माय लॉर्ड में काइंडली 12 हटा कॉलोनी विकास प्रकलन ये लिखा है इसमें, कॉलोनी विकास प्राकलन राशि सुपरविजन चार्ज कर्मकार 2%। एस्टिमेट चार्ज सब कुछ जोड़े हैं वो, क्योंकि इन्होंने इनका आप नोटिस भी देखेंगे इन पॉइंट्स पे साइलेंट है, सिर्फ शेल्टर को छोड़ के। एक सेकंड सर, नोटिस में सिर्फ उन्होंने आश्रय शुल्क और उसका लिखा हुआ अतिरिक्त आश्रय। गणना ठीक है, पत्रक के साथ अब आप क्या लिखा? They have also added charges under Rule 12 towards the supervision charges, which is not the subject matter of the notice annexure P1. Next para. Shri Gautam submits that petitioner has enclosed approved layout of the colony, and on the south of the colony, plots for housing of EWS have been shown. Full stop. It is submitted that respondents may be directed to carry out physical verification of the site, and if it is found that the plots which have been left for EWS are not in conformity with the provisions contained in Rule 10 of the 1998 rules, then they can issue show cause notice to the petitioner. Full stop. It is submitted that without considering the reply of the petitioner, respondents are bent upon to take coercive action. Next para. Shri Rohit Jain fairly submits that authorities will take into consideration reply of the petitioner before taking any coercive measure. Next para. In view of the aforesaid facts, it is directed that petitioner shall submit a copy of the reply along with the layout plan before the Chief Municipal Officer, Municipal Council, Narmadapuram within 7 days from today. 15 days. 7 days. CMO shall cause an physical spot inspection in the matter to verify the layout and whether petitioner has left open area for EWS category as is shown in the layout or not. Full stop. For that purpose, he may take assistance of the concerned RI and the Patwari. Full stop. If in the report of the RI and Patwari spot inspection report, it is found that there is non-compliance of the provisions contained in Rule 10, then a fresh notice to the extent of non-compliance be issued to the petitioner, asking him to either rectify the non-compliance or pay the shelter fees, etc. Full stop. Let this exercise be completed within 30 days of receipt of certified copy of the notice. Order being passed today, and without taking any, before taking any coercive action, petitioner be granted 15 days clear time to approach the court if he so desires. बारिश का मौसम चल रहा है, तो वो मेरे ख्याल से 1 month में नहीं हो पाएगा। 3 महीने कर दीजिए। Meanwhile, Lord Sahib, they may not take any. In the meanwhile, notice annexure P1 is hereby quashed. That's one humble request. Liberty may be granted to issue notice on the other statutory provisions, because apart from इसमें सब कुछ 11-12 भी included. किसने मना किया आपको? सर इसमें 11-12 already included था जो फॉश हो गया है. Supervision charge. Authorities will be free to issue fresh notice in terms of the spot inspection. And the other and for compliance under of other other statutory provisions of law if so required. My lord, highly opposed. Lordship, in this case, Lordship, the sole appellant Ramdas was died, Lordship. I filed the application for Order 22 Rule 3 for substituting the name of the legal heirs, Lordship. That is IA number 6233, Lordship, which is filed on 4/5. Hard on IA 6233/2023, an application for substitution of legal heirs of the petition number 1, as same is not opposed by Srimati Anjana Sahni, counsel for respondent number 1. It is allowed. Let necessary correction be carried out during the course of the day. Within 3 working days कर दीजिए, 3 working days. ठीक है. उसके बाद अब क्या है, मुद्दे पर आइए. A similar party is also a party in the connected हाँ ठीक है, वो क्या है, क्या मैटर क्या है?
my lord, the petitioners are the defendants herein. We are the plaintiffs, my lord. We preferred a suit for declaration and permanent injunction. जी. Thereafter, my lord, they preferred an application under Order 7, Rule 11 that has been rejected by the court below, challenging which they preferred a petition before this honorable court. That petition was allowed ex parte, to which we preferred a review petition. That review petition was allowed. Now, challenging that order of the review petition, they preferred another review petition. Now, by way of that order, that review petition, first one has ये been... तो इतना लंबी कहानी है, इसको बाद में सुनेंगे फिर. List after a week. Obliged. Serial number 74. May I please? Also, in this case, I have challenged the award passed by Learned Labor Court, Arranger P1, whereby the claim of the petitioner is rejected on the ground that did not consider Learned Code, Labor Court observed that in para 23 of the judgment, because petitioner not fulfilled the criteria of 25F of the Industrial Dispute Act and did not prove the 240 days regular working and the two not 240 days की Yes. रेगुलर वर्किंग आपने नहीं प्रूव करी. on the ground of that the award passed by the Learned Court. My submission is that I first came before the labor court and stating on the oath, and subsequently after the evidence that I am claiming this fact, lordship, I am the working since 2000, and subsequently in the year 2017 on the month of October they orally डिस्पेंस्ड विद योर सर्विस. चलिए, किस कोर वर्कर की आपने एविडेंस कराई बताइए. आपने किसी और सह कर्मचारी की एविडेंस कराई कि आप 2000 से काम कर रहे थे 2017 तक? पढ़िएगा. evidence is only recorded of the present applicant. फिर कैसे हो जाएगा? आप 2000 से 2017 तक किसी संस्थान में काम करते हैं. आपका कोई इतना मित्र भी नहीं है जो कि आके ये कह सके कि हमारे साथ काम करते थे. ये सब लग्जरी लिटिगेशन अब तो सरकार बहुत दे रही है, अलग अलग योजनाओं में इतने सारे बेनिफिट्स दे रही है. My submission that I am. अरे भाई, onus was on you to prove your engagement since 2000. Did you produce any documentary evidence or Yes, oral I am evidence? submitting the documentary बताइए, evidence. documentary evidence बताइए. Annexure. That the same record is there, lordship. I am. ये रिकॉर्ड है ना? जी. क्या डॉक्यूमेंट फाइल किया आपने? पेज नंबर 14 इन जजमेंट देयर ऑब्जर्व दैट विजय शंकर त्रिपाठी ने अपने आवेदन के समर्थन में वन मंडल अधिकारी को प्रेषित किए पत्र की पावती प्रति प्रदत्त P1, प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदत्त P2, लगातार 4 वन चौकी प्रभारी को प्रेषित पत्र की पावती प्रति प्रदत्त. चलिए, P2 से P4 देखते हैं एक मिनट. P2 क्या है? The certificate lordship. जी. The certificate is. हाँ. प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदत्त P2, लगातार 4 वन चौकी प्रभारी को प्रेषित पत्र की पावती प्रदत्त P5, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट प्रदत्त P6, लगातार 10 प्रमाण पत्र की सत्यप्रति प्रदत्त P11. Even I have filed some other document with additional document on record. जी. ये बैंक अकाउंट क्या है? जी. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट से 2014. In Paris. ये बताइएगा, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट से इनको किस चीज के पैसे दिए जा रहे थे? एक मिनट रुक तो जाइए आप. यस मिस्टर जैन, डायरेक्टरेट ऑफ ट्रेजरी एंड अकाउंट से किस चीज के पैसे दिए जा रहे थे जब ये आपके एम्प्लॉयड ही नहीं थे 240 दिन तक? Their job was basically in nature. They was engaged their daily rated worker. हाँ, ठीक है.
And daily rated worker, लेकिन whether he has put in more than 240 days of work or not, this is the issue which is to be dealt with here. If no, he, Lordship, they have not worked. हाँ बताइएगा. Para 17 of the order impugned, Lordship, is relevant. Para 17 पढ़िएगा please. Yes, Lordship. The document they relied upon, विजय शंकर त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र की प्रतियां प्रदर्श P2 लगायत 4, वन चौकी प्रभारी को प्रेषित पत्र की पावती प्रदर्श P5, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट की प्रतियां प्रदर्श P6. ये कहाँ से लिख रहे हैं ये आपके श्रम न्यायाधीश? 240 दिन. अब आइए P2 में आइएगा. P2 सर्टिफिकेट पढ़िएगा. P2 में लिखा है 1/9 प्रमाणित किया जाता है कि विजय शंकर त्रिपाठी सुरक्षा श्रमिक स्थायी नर्सरी बदवार में मेरे कार्यालय में दिनांक 1/9/2008 से 25/5/2014 तक सुरक्षा श्रमिक के पद पर कार्य किया. ये वनपाल दे रहे. तो ये कहाँ कैसे आ जाएगा कि 240 दिन तक काम नहीं किया जब ये ब्रोकन पीरियड भी नहीं है? देखिएगा इम्प्लू ये कौन है श्रम न्यायाधीश? ये अशोक कुमार त्रिपाठी. हाँ, ये तो बिल्कुल क्रिप्टिक ऑर्डर है ये. देखिएगा, petitioner has filed this petition being aggrieved of award dated 12/2/2020 passed by learned Labour Court Seedhi headed by Shri Ashok Kumar Tripathi, Labour Judge Seedhi, in case number 11/19/IDA within bracket reference, rejecting petitioner's claim for reinstatement for non-observance of the provisions contained in section 25F of the Industrial Disputes Act. Full stop. Petitioner's contention is that the Labour Court has passed a cryptic order by recording in para 12 that the, sorry, आपने पैरा कौन सा पढ़ा था? पैरा 14. Para 17 that exhibit P2 etc. does not reveal that petitioner worked for 240 days continuously in the organization. Full stop. Drawing attention to annexure P2, which is a certificate issued by वनपाल नर्सरी प्रभारी Chorhat district Seedhi reveals that he certified that petitioner worked from 1/9/2008 to 25/5/2014. There is no mention of the fact that he worked for broken periods. Therefore, it is apparent that and thereafter there are certificates annexure P3 showing his continuous working from 26/5/14 to 31/8/14, from 1/9/14 to 31/12/16, annexure P4, exhibit P4. Full stop. It appears that London Labour Court failed to read the orders, read the certificates in the correct perspective, and instead of shifting the burden on the respondents to lead the evidence that these certificates were not genuine and petitioner never worked for 240 days in a year in a continuous manner, reached to erroneous conclusions without there being any material on record. Full stop. This treatment in the hands of the Labour Court cannot be appreciated. Full stop. Impugned award passed by the Labour Court having failed to take into consideration the evidence which was laid before the tribunal is cryptic and is liable to be set aside and is hereby set aside. Matter is remitted to the learned Labour Court Seedhi to take into consideration evidence available on record and pass a fresh order after giving opportunity of hearing to the rival parties within 60 days of receipt of certified copy of the order.
My lord, various lands of village Shahpur, the district Satna was allotted. विदेश शाहपुर सतना में कब से आ गया? अभी तक तो डिंडोरी पढ़ते थे। डिंडोरी है विदेश शाहपुर शेरपुर है सर, शेरपुर। जी जी जी, बताइए। My lord, the collector has passed the impugned order annex P8. जी P8 at page 28 क्या कहा उसमें? under section 165(7). जी पढ़िएगा। Now, my lord, your lordship may have a look at section 165. Section 7, my lord, deals with the attachment, auction of the decree, etc., etc. My lord, that is not applicable. Section 7(1)(a) was deleted in 1992. जी The only provision under which, my lord, the order appears to have been passed is 7B. जी 7B जी 7B. No, my lord, 7B was inserted in 1990-80. yes This land was allotted to the petition, the father of the respondent number 3 and 4, Shivdaya, in 1966. जी Now, our High Court has held that the provisions of section 165(7) cannot be made retrospective effect. जी I have brought a ruling of this honorable High Court. ठीक है, फैक्ट्स पहले पूरे कर ले, फिर रूलिंग देखेंगे। फैक्ट्स बता दें, फैक्ट्स बता दें। ठीक है, इसे मैं But say yes, sir, that this land was recorded as government land जी since 1958-59. जी In given on lease to Shivdaya, forefathers of Shivdaya. In 1966, this land was allotted to various persons, including the father of the respondent number 3 and 4. जी The numbers were 70 in number. जी Number, a complaint was made by the member of the Janpad Panchayat. जी Number, he said that the permission required of the collector is not obtained before the land is transferred. जी The father of the respondent number 3 has transferred the land in 1993 on the name of the petitioner. जी जी बताइएगा वो लीज डीड कहाँ है जो इनके फादर के नाम पे रिस्पॉन्ड नंबर 3 शिवदैया के नाम पे एग्जीक्यूटेड लीज डीड कहाँ है? Lease deed नहीं है सब, that was an admitted fact. That is written in, my lord, the order of the SDO of the Tahsildar. We will have to see that what were the terms and conditions on which land was allotted to the father of Shivdaya. Unless we see those terms and conditions, no effective adjudication can take place. You have to see, your case is that this provision under section 165(7)(b) was added in the year 1980. Land was allotted in 1966. This Land was allotted in 1966. 66 ही तो बोल रहे हैं। हाँ। Therefore, this provision of 7B will not be applicable retrospectively. But accepting your argument, we'll have to see that what were the terms and conditions of the lease which was allotted in favor of Shivdaya's father, whether it was freehold land, it was free from encumbrances, it could have been transferred by Shivdaya's father or not. My lord, I did not file that order. वो फाइल कर दीजिए। Lease deed in the court. वो फाइल because my lord, the order, your lordship, have a look of the order of the उसको फाइल कर दीजिए, उसको फाइल कर दीजिए आप। देखिएगा, let copy of the lease which was executed by the state government in favor of father of Shivdaya be brought on record, because the stipulations contained in the said lease deed will have a direct bearing on the outcome of this case. Full stop.
Respondent counsel is also directed to bring the aforesaid lease deed on record along with the original record so that appropriate adjudication may take place. We have Needful be said in the done written within. that he is the trespasser. Huh? We have said in the written. ठीक है, you may have said bring the lease deed on record. And IR continue. हाँ ठीक है, कितने दिन में लाएंगे आया? Let lease deed be brought on record within 2 weeks. 4 weeks. 2 weeks. 4 weeks में लाएंगे. 4 weeks. List IR continue. in the week commencing 28 अगस्त 2023. IR to continue. Year number 76. Ms. Shukla, Mohanlal Mishra. This miscellaneous petition is the outcome of rejection of order 9, rule 9 and its appeal under section 43. Lordship, there are two plaintiffs. The plaintiff number 1 was 90-year-old and plaintiff number 2 is in a government job. Lordship, may kindly have a glance in the impugn order, annexure P5, page 37. साक्षी राजेंद्र कुमार गर्ग का एक कथन रहा है कि बाबादीन वात रोग से पीड़ित थे तथा वे जिला कौन सा पेज पे पढ़ रहे हैं? लॉर्डशिप, पेज नंबर 37 yes. पेज 12 जी. साक्षी राजेंद्र कुमार गर्ग का एक कथन रहा है कि बाबादीन वात रोग से पीड़ित थे तथा वह जिला रायसेन में शासकीय नौकरी में था, जिस कारण अनुपस्थित दिनांक को अनुपस्थित रहने के कारण उसका वाद खारिज हो गया। यह उल्लेखनीय है कि विद्यमान विचारण न्यायालय के समक्ष वादी राजेंद्र कुमार गर्ग ने ऐसी कोई साक्ष्य, दस्तावेज या मौखिक प्रस्तुत नहीं की जिस बात की पुष्टि कर सके कि वाद खारिज होने के दिनांक से 1 वर्ष पूर्व या अनुपस्थित दिनांक पर बाबा रोग वात रोग से पीड़ित थे, जिससे साक्षी राजेंद्र कुमार गर्ग को इस बात पर विश्वास किया जाना कोई कारण लक्षित नहीं होता कि वाद खारिज के दिनांक को बाबा दीन वादी क्रमांक 1 वात रोग से पीड़ित थे। वादी राजेंद्र कुमार गर्ग ने ऐसा भी कोई साक्ष्य प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया कि वह जिला रायसेन में शासकीय नौकरी कर रहा। वेयर लॉर्डशिप, इट्स अ मैटर ऑफ admitted situation as the respondent they admitted in their reply that yes, I am in a government job. Lordship, kindly have a glance in this very order. Page number 33 पैरा 5 जी पढ़िएगा। अनावेदक गण की ओर से उपयुक्त आवेदन का इस आधार पर विरोध किया गया। आवेदक क्रमांक 1 का दावा जिस समय खारिज हुआ था वह अपने प्रकरण की पैरवी लगातार करता था क्योंकि वह स्वस्थ था। आवेदक क्रमांक 2 भले ही रायसेन पदस्थ था। क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे ट्रायल कोर्ट? जब आपका एडमिशन है that he was posted at रायसेन, उसके बाद where was the need to produce evidence? माइलर्ड, इसमें जो फैक्ट है ये बाबादीन ने सूट फाइल किया था जो आज बाबादीन इशू लिस्ट खत्म हो गया। ठीक है। और बाबादीन का जो दावा था डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन, और जो राजेंद्र है तो राजेंद्र का कहना है कि हमने बाबादीन से मैंने 8,000 रुपए में परचेज किया है, तो इनकी रिलीफ जो है ना स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के है। और सिविल सूट 95 में फाइल हुआ और 94 में, और 94 से 2007 तक कोई एविडेंस नहीं आई और कोई इसमें नहीं। 2007 में साक्ष्य के अभाव में केस खारिज हुआ। दावा कब का है ये? 94 का है। 94 का दावा है माइलर्ड। इसमें जो रिकॉर्ड है इसमें प्लेंट में देख लीजिए 2 रिलीफ है माइलर्ड। वो तो क्वेश्चन ऑफ एविडेंस है ना, एविडेंस आपका दावा तो इन्फेक्शियस, आपका राइट नहीं बनता है। बाबादीन के एलास आ सकते हैं। बाबादीन ने सिविल सूट लगाया डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन। राजेंद्र की जो रिलीफ है प्लेंट पैरा नंबर प्लेंट के पैरा नंबर 14 में है। प्लेंट आपने फाइल की है क्या? प्लेंट नहीं, वो रिकॉर्ड आ गया था। रिकॉर्ड 99 का आया है। एक सेकंड देखेंगे क्या ये अपील है। ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड है नहीं।
पढ़ लीजिएगा ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर, व्हाट इज रॉन्ग इन इट। आपने स्वयं अपनी क्रॉस एग्जामिनेशन में स्वीकार किया कि 2006 में आपको जानकारी हो गई थी कि बाबा दीन दावे में प्रतिरक्षा रक्षा करने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर प्रतिपरीक्षण की कंडिका 6 में साक्षी ने स्वीकार किया है कि जून 2006 में उसने जानकारी ले ली थी कि मुकदमे बाबा दीन गठिया के कारण नहीं जा पा रहे हैं। तब ऐसी दशा में यदि जून 2006 में वादी क्रमांक 2 को उक्त जानकारी हो गई थी तब उसे स्वयं न्यायालय में वाद की कार्रवाई हेतु उपस्थित होना चाहिए था। There was a change of counsel by the Babadin, and that information was not available with the plaintiff number 2 who posted. You had a common counsel? Lots of common counsel. Then, but it was changed. नहीं, Change एक counsel. second, एक second. Without taking wakalatnama from both the parties, can counsel be changed? That means that your counsel, even if Babadin had given wakalatnama to a new counsel, your counsel continued to be the same, and he should have given you intimation about the. Let us read the. It was only by way of suggestion. पढ़िए। Indian. Yes. पढ़िए। पहले लॉर्डशिप एमपी ऑर्डर देख लें। हाँ पढ़िए ना। 25/9/2007। 25/9/2007। पेज नंबर। That I could not file. Then why you have not filed? हाई कोर्ट को आप लोग बहुत कैजुअली लेते हैं। At the time of filing this was not नहीं, available. ये सब बेकार की बात है। फाइल कर देते। नहीं, अभी देख लेते हैं रिकॉर्ड। ठीक। क्या डेट है इसकी? 25/9/2007। 25/9/2007। Order dated 25/9/2007, by which suit was dismissed for want of prosecution, is not available on record. कहा तो है आपने, खुद अपने उसमें कहा है। जी। मैं वहां नवंबर में छुट्टी लेकर घर आया था। इसके पहले जून सन 2006 में घर आया था। मैं जब छुट्टी में घर आया था तो उसके 1-2 दिन बाद बाबा दीन से मिला और मुकदमे के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वे लगभग साल भर से असमर्थता के कारण पेशियों में नहीं गए और वे नहीं जानते कि मुकदमे में क्या हुआ। जब मैंने दीवानी दावा दायर किया था तो रामायण प्रसाद वकील हुए थे। दूसरे वकील के नियुक्त होने की जानकारी मुझे नहीं थी। बाबा दीन ने बताया था कि दूसरे वकील कौन है और उन्हीं के पतानुसार मैं वकील से मिला था और वकील से मिलने पे पता चला कि दीवानी दावा खारिज हो गया। जानकारी होने के दूसरे दिन मैंने मुकदमा पुराना चलाने के लिए आवेदन दिया। जून के बाद ये 1.25 साल बाद है। ठीक है ना, एक सेकेंड।
जी ठीक, एनीथिंग एल्स? दर्ज अच्छा नहीं, 25/9/2007 का ऑर्डर देखा। कहाँ है वो ऑर्डर? 25/9/2007 का ऑर्डर कहाँ है? दर्ज इसी में तो खारिज किया, 25/9/2007 को ही खारिज किया। हाँ, कहाँ है वो ऑर्डर? ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड ट्रायल कोर्ट का रिकॉर्ड में नहीं है ना यहाँ पर, और कोई रिकॉर्ड है क्या? ये सर्टिफाइड कॉपी दिखाइए, हाँ क्या लिखा उसमें? प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है, किंतु ना तो वादी स्वतः उपस्थित है और ना ही वादी साक्षी उपस्थित है। वादी के अधिवक्ता श्री रामस्वरूप पांडे ने व्यक्त किया कि वादी ने उसे संपर्क करना बंद कर दिया, उसके द्वारा बार बार पत्र लिखाने पर वह नहीं आ रहा है। इस कारण वे इस प्रकरण बताइए, में आपने इस वकील साहब के बारे में क्या लिखा? जी, वादी के वकील रामस्वरूप पांडे ने व्यक्त किया कि आपके वकील थे, ऐसा नहीं है कि नहीं थे, कि वादी ने उससे संपर्क करना बंद कर दिया, उसके द्वारा बार बार पत्र लिखे जाने के बाद भी वह नहीं आ रहा है, इस कारण से वे इस प्रकरण में उपस्थित नहीं होंगे। प्रकरण आज वादी साक्ष्य हेतु नियत है। वादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई। असफल रहा है, आज स्वतः उपस्थित नहीं है, इस कारण से प्रगति नहीं हो पाई। वादी के अनुपस्थित रहने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने में असफल रहने के कारण दावा आदेश 17 नियम 3 के प्रावधानों के तहत खारिज किया जाता है। दीजिएगा, सीपीसी दीजिएगा। May I read? हाँ प्लीज। Court may proceed notwithstanding either party fails to produce evidence, etc. Where any party to a suit to whom time has been granted fails to produce his evidence, or to cause the attendance of the witnesses, or to perform any other act necessary to the further progress of the suit for which time has been allowed, the court may notwithstanding revolve A. If the parties are present, proceed to decide the suit forthwith. B. If the parties are or any of them is absent, proceed under Rule 2. So the direction is under Rule 2. This. Lordship, and relying upon certain judgment. हाँ दे दीजिए। May I read? हाँ दीजिए ना। This is AIR. हाँ AIR 1996 MP page 243. AIR 1996 MP 23 Page 243. 243, yes. May I read the relevant paragraph? Please, but similar, almost similar case. It is under Order 9 Rule 13, and which is akin to Order 9 Rule 9. The appellant, who claims to be an old woman about 80 years, was residing at Jabalpur and was supposed to conduct the case at Sagar. It is nowhere shown as to why her presence was required on the earlier dates. Learned judge was unnecessarily influenced by the conduct of the appellant on the earlier dates. According to Order 9 Rule 13, party is required to satisfy the court that there was a sufficient cause which prevented the party from making appearance in the court on the date when the case was called on hearing. The word on the date when the case was called on hearing are the key words. A party is not required to show that it was sincerely and faithfully appeared in the case. There are many proceedings on which the presence of the parties is not needed. It is only the date of hearing that to such date when the presence of parties is needed. In the instant case, if on 27/90 the appellant was absent, then she was required to satisfy the court regarding the sufficiency of cause only for the absence on 27/90. The application dated 16/10/2090, it was also barred by limitation, speaks that the appellant has no notice, nor she has been received any information from the counsel.
The application further speaks that on 15/10/90 when the ऐसा when आपने she अपने came, एविडेंस में कहाँ कहा है कि वकील पांडे जी से आपको कोई सूचना नहीं मिली? जी पांडे जी को आपके बता, पास अरे आपके पास तो ये ऑर्डर की कॉपी थी जब आपने लगाया 99 की एप्लीकेशन। इसमें लिखा है कि आपके वकील रामस्वरूप पांडे ने व्यक्त किया कि वादी ने उनसे संपर्क करना बंद कर दिया और उसके बाद बार बार पत्र लिखे जाने पर। let me further read this statement. हाँ पढ़िए। On 15/10/90, when she came to the contact the council, she was informed that the ex parte proceeding have already been drawn and the case was fixed on 16/10/90. Her age and place of residence certainly are material considerations. No doubt, it is true that an application under Order 9, Rule 13 CPC cannot be allowed on humanitarian grounds, but the courts cannot close their eyes to the realities of the life. The appellant who resides at a long distance, like in the case on hand from Gor to Raisen, who is an old and infirm and sick lady, as allegedly obviously is entitled to seek the benefit of provision of Order 9, Rule 13 of CPC. In the instant case, the appellant's categorical statement that she was not informed by the council, she had no knowledge about the dates, and being an old woman living at Jabalpur at a long distance from Sagar, obviously these three facts could not be disbelieved by the learned trial court. The respondent merely contend that if the counsel for the appellant pleaded no instructions like the case on hand, then the appellant has to thank herself. It cannot be gainsaid that after engaging a counsel, a party is supposed to sit in the court on each date. The party is entitled to rely upon the counsel, and if the counsel fails to his duty, either to inform the party or to seek proper instruction before pleading no instruction in the court, then the party cannot be made to suffer. In my opinion, the court below was wrong in holding that the appellant could not make out a sufficient cause for setting aside the ex parte decree. If there is another judgment, well, the language of Order 9, Rule 9 is still absolutely clear. 2001 Volume 6 SCC page 176. ये सब नेट से निकाला मैंने, नेट से पढ़ा. Volume 6 SCC page 176. 176. पार्टी का नाम पढ़ेंगे प्लीज. पार्टी का नाम M.K. Prasad versus P. Arumugam. In the instant case, the appellant trying to explain the delay in filing the application for setting aside the ex parte decree, as is evident from his application filed under Section 5 of the Illustration Act, accompanied by his own affidavit. Even though the appellant appears not to be vigilant as he ought to have been, yet his conduct does not, on the whole, warrant to castigate him as an irresponsible litigant. He should have been more vigilant, but on his failure to adopt such extra vigilance should not have been made a ground for ousting him from the litigation. With respect to the property consideredly to be a valuable one, while deciding the application for setting aside the ex parte decree, the court should have kept in mind the judgment impugned, the extent of property involved, and the stake of the properties. We are of the opinion that the inconvenience caused to the respondent for a delay on account of appellant being absent from the court in this case can be compensated by awarding appropriate and exemplary cost. In the interest of justice and under the peculiar circumstances of the case, we set aside the order impugned and condone the delay in filing the application. दावा किस चीज का था आपका? Lordship? दावा किस चीज का था? Sir, declaration of permanent injunction. There will be irreparable loss. अच्छा. Whatever my friend submitted the application for allows to be क्या report. डिक्लेरेशन मांग रहे थे? एक क्षण बताइए तो क्या डिक्लेरेशन मांग रहे थे आप? है दावा आपके पास?
दीजिएगा। यह कि वादी दावा वादीगण बाबत स्वत्व स्वामित्व व अधिपत्य की घोषणा डिक्री किया जाकर घोषित किया जाए कि विवादित दावा भूमि बाबत घोषणा स्वत्व स्वामित्व अधिपत्य पारित की व प्रसारित किए जाने चिरस्थायी निषेधाज्ञा बाबत भूमि क्रमांक इतना इतना यानी इतना हेक्टर जिसका पुराना इतना इतना है जी। दावा यह कि वादी क्रमांक 1 वंश सुख नीचे दिया जा रहा है, वंश वृक्ष नीचे दिया जा रहा है, विवाद के निराकरण के लिए आवश्यक है। सखाराम हनुमान प्रसाद मृत बाबा दीन मदीन, ठीक है। प्रतिवादी क्रमांक 1 व 6 का वृक्ष दिया जा रहा है। आपका क्या लोकस है इसमें? हु आर यू? वादी क्रमांक जो 2 अनुबंध लेख क्रमांक 22 से बनने द्वारा वादी क्रमांक 2 को हक में उक्त विवादित भूमि फीस का विक्रय 15,000 रुपए में करने का जो किया था। जमीन उनके पास है ही नहीं, जिसके लिए भी दावा लगा रहे हैं, बेच सकते हैं वो। अनरजिस्टर्ड सेल डीड। हाँ, वेयर इज दैट सेल डीड? पैरा नंबर। चलिए, और कुछ बताना है आपको? फाइल कर देते हो। नहीं नहीं, फाइल क्यों करेंगे आप? सब है ना यहाँ पर। At present, the question of non-presence on the date when the impugn order is passed. ठीक है, ठीक And है। everything, whatever my friend says, it's a question of evidence. ठीक है, विल पास ऑर्डर्स। रख लीजिए बस। आपका दावा लौटा देंगे कल का दावा संभाल के कल लौटा देंगे। It's a question of irreparable loss. हाँ हाँ बिल्कुल। नंबर 130 My lord, this matter may kindly taken after day after tomorrow. नहीं नहीं, ये सब नहीं, आपके वकील साहब आ ही नहीं पाते हैं। My lord, he is out of station, my lord. इसमें एडजस्टमेंट नहीं लिखा हुआ है। Out of station. देयर इज नो एडजस्टमेंट मेंशन्ड इन द कॉज लिस्ट। देखिएगा, ये वकील साहब एडजस्टेड है क्या? If there is adjustment, I'll adjourn the case. If there is no adjustment, I'll not adjourn the case. Then you'll have to argue. My lord, file is not available. My lord, अभी फाइल ये सेकंड कॉपी हम दे देते हैं। आप एग्जीक्यूट करिए ना, कोई स्टे तो है नहीं इसमें। नहीं सर, 50% का स्टे। कब कर दिया ये ऑर्डर है मतलब 21/3/2022 को। 21/3/2022? यस। इसमें तो कोई ऑर्डर लगा 21/3/22 का। 21/3/22, अच्छा। बताइए किस ग्राउंड पर आए हैं ये अपील में? ये मतलब दो ही ग्राउंड है इनका। एक तो अवियस जो awarding compensation amount jointly and severally by the ground that the disease at the time of death was aged and therefore was a senior citizen. चलिए, इशू नंबर 3 इसी को चैलेंज किया। कितनी एज मानी है मृतक की? ये 60 से 65। ये पेरेंटल कंसोर्टियम तो हट जाएगा भाई, इतना मॉडिफाई कर देते हैं। मतलब इसमें जो अरे 32, 36, 34, 32 साल के हैं। प्रणय सेठी में पेरेंटल कंसोर्टियम तो नहीं मिलेगा, बाकी आपका अवार्ड इंटैक्ट रहेगा। ये जो जजमेंट है जिसको कंसीडर करके ट्रायल कोर्ट प्रणय सेठी में तो नहीं है ना? इसमें कहा है सर कि अगर पेरेंटल कंसोर्टियम का कहाँ कहा है प्रणय सेठी में? बता दीजिएगा। जो जजमेंट आपकी अपील है नहीं, जो जजमेंट कंसीडर किया गया उसमें पेरेंटल कंसोर्टियम है नहीं। देखिएगा, दिस अपील इज फाइल्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी being aggrieved of award dated 13th December 2021, passed in claim case number 242 of 2019 by Learned Motor Accident Claims Tribunal, Sivni,
on several grounds like deceased was senior citizen, there is no proof of his income. The children who have filed the appeal are all majors and therefore dependency could not be proved. Full stop. It is, in addition, it is submitted that tribunal has awarded a sum of rupees 1,44,000 under the head of loss of parental consortium after relying on the decision of Pranay Sethi, whereas only a sum of rupees 30,000 is payable under the miscellaneous. Sorry. Loss of parental consortium is not permissible as per the law laid down by Supreme Court in Pranay Sethi, and therefore that amount is excessive. Next para, Shri शुभ नाम बताइए. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता. राजेंद्र प्रसाद गुप्ता supports the award. आप किसके लिए? सुबोध पांडे. सुबोध पांडे तो मालूम है. Respondent number 5. For respondent number 5 supports the award. Next, after going through the judgment, comma, first two grounds taken by the petitioner, taken by the appellant that claimants are major and there is, and they have failed to demonstrate the dependency is not made out. In fact, any of the legal heirs can file a claim, and therefore the first ground taken by the counsel for the appellants is not made out. Next para. As far as income of the deceased is concerned, that has been rightly construed by the tribunal, taking into consideration a fact that deceased was a pensioner and was getting pension, and therefore after applying appropriate multiplier of 5 as per the age of the deceased in terms of the law laid down by Supreme Court in Sarla Verma, which provides for application of multiplier of 5 for a person above age of 65 years, award has been passed, which cannot be faulted with. However, impugned award awarding a sum of rupees 1,32,000 to each of the sons under the loss of parental consortium cannot be approved. Full stop. Thus, this amount of parental consortium being contrary to the judgment of Pranay Sethi is hereby set aside. It is directed that claimants will be entitled to only a sum of rupees 7,13,000 in place of rupees 8,45,000 as awarded by tribunal. Other terms and conditions of the award shall remain intact. In above terms, appeal is disposed of, record be sent back. इनका नाम और शुभ नाम बताइए. योगेश कुमार चौरसिया मैडम. योगेश कुमार चौरसिया फॉर द अपीलेंट डाल दीजिएगा. मैडम बिहाफ ऑफ के सिंह. नहीं, ऑन बिहाफ नहीं होता. Just came to know that there is a review petition filed by the State Bank of India against the final order passed by the Honorable Supreme Court regarding declaration of fraud, my lord. I'm just praying that it may kindly be kept after 2 weeks, my lord. The same matter, at the instance of my friend only, has been disposed of other day, my lord. Yes, my lord. Courtmaster sir. Having the order. Courtmaster sir. That day also review was pending, and in this fact, you only have communicated earlier in the court of my lord, Mr. Justice Bhatti, that there is a review pending. When I took a stand that review is pending, you opposed and you said no, it needs to be disposed of. Now you are taking other way around. अगर आपके पक्ष में कोई ऑर्डर हो जाता है तो यू विल बी फ्री. आपको तो अभी हियरिंग ही तो देना है इनको. That's right, my lord. सेम ऑर्डर कर दीजिएगा इसमें. मतलब स्मॉल मॉडिफिकेशन आई एम प्रेइंग मतलब करेक्ट करके दे दीजिए पेंसिल से इनके कंसल्टेशन में. मतलब इफ योर लॉर्डशिप कैन जस्ट टेक हाफ अ मिनट, एक बार दीजिएगा कोर्ट मास्टर साहब. योर लॉर्डशिप में कम टू थर्ड पेज में लॉर्ड. योर लॉर्डशिप हैज सेड इन द फर्स्ट लाइन इटसेल्फ में लॉर्ड, ऑन अकाउंट ऑफ एज फ्रॉड इज हियर बाय क्वास्ट. मतलब एनी अदर एक्शन बेस्ड ऑन दैट डिक्लेरेशन फ्रॉड इज अंडरस्टैंड. जब फ्रॉड मतलब kindly appreciate, my lord. Kindly appreciate. My lord, literal meanings are sometimes taken, my lord, by the officers that look here, subsequent nothing has been said by the court, my lord. See, fraud and consequential action. Grateful, my lord. I'm obliged to your lordship. My contention may kindly go. कोई जरूरत नहीं है आपका. तो सुनवाई के वक्त अगर रिव्यू में आपके पक्ष में ऑर्डर हो जाए तो आप इसको कर लीजिएगा. ठीक है. It is very clear that if Supreme Court in the meanwhile decides review in favor of the respondent bank, then they will be free to apply that ratio
to the facts of the present case. That's understood. Look, that fraud in consequential action. कर दिया भाई, I'm कितनी grateful. बार बोलेंगे? I'm grateful. Serial number 137. Better counter sign one. Rawat. क्या है? Counter sign one. काउंटर साइन वाला ऑर्डर कर दीजिएगा। चलिए Page 23 में। पेज 23 कुछ करेक्शन तो नहीं होना है? दे दीजिए, इनको करेक्ट करके दे देंगे। Serial number 138. Kumar Swami. So in this petition, Lordship, we are challenging orders dated 27/1/2023, Lordship, that is Annexure P1. कौन सा ऑर्डर? 27/1/2023, Lordship, it is annexed as Annexure P1. Passed by? Lordship, that is मध्यस्थम आदेश। Lordship, that. Lordship, we are challenging this on the ground that इसकी तो अपील होती है। Lordship, but they have violated the provision of section. वो भी then also you are required to bring this fact to the notice of the appellate authority. Lordship, the This order is appealable. Am I right or wrong? This order is appealable. दीजिएगा MSME Act दीजिएगा। This order has been passed under section 18 subsection 3, Lordship. Yes, yes. If Lordship, the conciliation fails, then the matter has to be referred for arbitration, and then appeal will lie, Lordship, in the form of section 34. देखते हैं। MSME Act दीजिएगा। There the conciliation initiated itna is not successful and stands terminated without any settlement. The council shall either itself take up the dispute for arbitration or refer it to any institution or center providing alternate dispute for itna and shall then apply to the dispute as if the arbitration was in pursuance of an arbitration agreement. And section 19 is Lordship that appeal. Yes. No application for setting aside itna council itself. वो 75% डिपॉजिट करने से बचने के लिए आप यहाँ आ गए। That is not the case, Lordship. Actually, your Lordship have perused section 18 subsection 3, your Lordship. In that, it has been clearly stated that if the conciliation fails, then the council shall conduct the arbitration or it shall refer the matter to any alternate dispute resolution forum for arbitration. But in this matter, Lordship, without even though the conciliation proceedings had failed, but the council, without referring the matter to for arbitration, directly passed the order, your Lordship, directing us to deposit the award money, your Lordship. So this is a clear violation of section 18(3). पैरा 5 पढ़ लीजिएगा। 18(3) का कोई वायलेशन नहीं है। Lordship, that where the conciliation, if I may read section 18(3). नहीं, आप इम्प्यून ऑर्डर पढ़िएगा। परिषद ने अनावेदक से पूछा कि नगर निगम में जबलपुर में फाइल मूवमेंट की क्या प्रक्रिया है, फाइल कैसे पहुंचाते हैं, निर्धारित नहीं है क्या, जब फाइल भेजते हैं तो क्या फाइल की पावती लेते हैं। अनावेदक ने कहा कि मैंने तो स्वयं आवेदक के साथ फाइल पहुंचाई थी। परिषद ने अनावेदक से कहा कि लगता है कि आप विभाग का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं। अनावेदक ने अवगत कराया कि हमने कमिश्नर महोदय से इस बारे में बात की, उन्होंने बताया कि संबंधित को नोटिस दिया गया है। अनावेदक प्रेम नारायण उपायुक्त द्वारा बताया गया कि प्रकरण में भुगतान नहीं हुआ, ये प्रमाणित है एवं फाइल की खोजबीन की कार्रवाई की जा रही है। आवेदक ने कहा कि पूर्व सुनवाई 14/11 को परिषद अध्यक्ष ने इसे अत्यंत गंभीरता से लिया था एवं आयुक्त नगर निगम जबलपुर से प्रकरण के संबंध में दूरभाष पर चर्चा की थी एवं दूरभाष पर निर्देशित किया था कि प्रकरण से संबंधित सभी अभिलेखों का परीक्षण करें तथा अपना लिखित प्रतिवेदन परिषद को 15 दिवस में उपलब्ध कराएं, परंतु आयुक्त नगर निगम ने परिषद के आदेश की अवहेलना की है। Then Lordship, they have stated that प्रकरण में सुलह एवं समझौते की कार्यवाही विफल हो चुकी है। हाँ, अतः प्रकरण में अंतिम मध्यस्थम आदेश, that is arbitration आदेश जारी किया जाए और उन्होंने they have a right. Now you have a remedy to challenge this before under section 34. Lordship, if I may, Lordship, I would like to cite a judgment. हाँ, दीजिएगा ना।
In that case also, Lordship, the ex parte proceedings were conducted against one of the parties, Lordship. Ex party कहाँ है तो बाय पार्टी है ये तो. Lordship, in that case, the facts are somewhat different, but in that case also, Lordship, directly, even though conciliation had failed, directly the council had passed the award, and the Supreme Court had, Lordship, deprecated the action of the council, Your Lordship. बताइएगा कहाँ लिखा है? Lordship, it starts from the relevant it starts from paragraph number 8, Your Lordship, the findings of the Honorable पढ़िएगा. Lordship, only on the ground that even after receipt of summons, the appellant has not appeared, the council has passed order/award on 6/8/2012 as per section 18(3) of the MSME Act. If conciliation is not successful, the said proceedings stand terminated, and thereafter council is empowered to take up the dispute for arbitration on its own or refer to any other institution. The said section itself makes it clear that when the arbitration is initiated, all the provisions of the Arbitration and Conciliation Act will apply as if arbitration was in persuasion of an arbitration agreement referred under subsection 1 of section 7 of the Act. Then this section has been reiterated, Lordship. Then next para may be seen. From a reading of section 18.2 and 18.3 of the MSME Act, it is clear that the council is obliged to conduct conciliation, for which the provisions of section 65 to 81 of the Arbitration and Conciliation Act would apply as if the conciliation was initiated under part 3 of the said act. Under section 18.3, when conciliation fails and stands terminated, the dispute contention is that once conciliation had failed, then council was responsible for taking up the arbitration in terms of the provisions contained in section 18 within bracket 3 of the MSME Development Act 2006 under in arbitration, but it was required to follow the procedure given in sections 20, 23, 24, 25 of the Arbitration and Conciliation Act 1996, but without following the procedure, दीजिएगा Arbitration and Conciliation Act. Without following the procedure, impugned award has been passed, which is contrary to the judgment of Supreme Court in Jharkhand Urja Vikas Nigam Limited versus the State of Rajasthan and others, decided in Civil Appeal number 2899 of 21 on December 15, 2021. Full stop. Submitted that these proceedings were not initiated making compliance of these provisions contained in section 20, 23, 24, 25 of the Arbitration and Conciliation Act. Therefore, the impugned order is bad in law. Issue notice to the respondents on payment of PF per registered AD post within 7 days, returnable 4 weeks. In the meanwhile, in case petitioner deposits 75% of the amount so assessed by the council, for the remaining amount, execution shall remain stayed. List in the week commencing 11 सितंबर 2023. Serial number 145. This matter, I referred an application for vacating stay. I filed my reply also on behalf of respondent corporation. इतनी जल्दी तो हो नहीं पाएगा, 4:30 ऑलरेडी हो गया है. देखिएगा, list this case next week on joint. Due to paucity of time, case could not be taken up today. List next week. चलिए. Serial number 151. Lot my temporary permit. टेम्पररी परमिट के एप्लीकेशन का ऑर्डर किस पेज पे लगा है? 20. Next P3 page number 20. सेम ऑर्डर कर देना, पैरिटी के ऊपर करके. जी.
Serial number 152. My lord, the corporation has issued the demolition notice. Earlier, my lord, on 6/7/2020, भी तो mention हुआ my lord has issued the notice. After receiving the notice, the corporation issued the notice of demolition of my building जी without considering my application for compounding, which is pending since last 1 year. issue notice to the respondent. कौन है standing counsel? Is standing on Mr. Pawar and Mr. Utkarsh Agarwal. उनको बुला लीजिए. सर रिक्वेस्ट किया था बोले नोटिस तो जा चुके हैं ऑलरेडी. कब का है नोटिस? नोटिस 6-7 को ऑर्डर किया आपने. 6-7 को इतनी जल्दी थोड़ा ना तामील हो जाएगी. तामील निकल भी वीक कमेंसिंग 31/7 को लगाया था. लेकिन उन्होंने 27 तारीख को तोड़ने के लिए नोटिस दे दिया. ठीक है. इसलिए इसको स्पेशल रिक्वेस्ट लिस्ट करा. This case tomorrow. Mentioning name of Shri Utkarsh Agarwal as counsel for the respondent Municipal Council Katni. Municipal Corporation? Yes. Corporation Katni. An advance copy of the petition may be given to the respondent council. चलिए. Serial number 153. Lords, in this petition, I am challenging impugned order Annexure P3, Lords, whereby the collector has directed that six apartments shall be transferred their offices to the old building of Zilla Panchayat Balaghat, my lord. Despite of the fact that क्या है? Who are you? Lord, I am the president of Zilla इससे क्या होगा? Lords, I have been we have been directed that we shall be shifted to a new building, my lord. New building is yet to be completed. It is not even possible for them to work over there. That is issue notice. Notice is waived by Shri Ayush Vajpayee. Ayush Vajpayee. He may seek instructions that in regard to petitioner's allegation that new building is yet not complete and still petitioners have been asked to shift to new building. Let instructions be completed within 7 days. List in the week commencing 7 August 2023. Lord, they may Sir, Shreyas is there. कौन है? बुला लीजिए ना. Also standing counsel of the. हाँ तो इनको कर लीजिएगा. श्री शुभ नाम बताइए. श्रेयस दुबे. श्रेयस दुबे एक्सेप्ट्स नोटिस कर लीजिएगा 152 में. हाँ. Lordship, my lord, item 79 and 79.1 are same as 122, my lord, which your lordship has disposed of, my lord, that fraud उनको matter. साथ में वकील साहब को लेकर आइए. मेंशन नहीं हुआ था 79. There, oh, no problem. लिस्ट लगा तो हाँ डिफॉल्ट में लगा. श्रीवास्तव जी एक साहब को बता दो कि इसको 40 पैसों की किस्त दे दी दीवान आज. हाँ? नहीं, वो साहब ने बोला था कि मंडे ट्यूसडे तक दे देना, तो दे दिए 40 पैसों की. और बात क्या मिल लूं क्या, बता दूं? हाँ मतलब ये मेरे पास टाइम है तो विदिन अ वीक ना, मैं कल उसको मतलब कल कर दूंगा उसका. अगर फाइल हो तो बताइए तो